that? मैंने सोचा नहीं था मैं कभी बुक लिखूंगी, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, कुछ भी नहीं. मैंने अपनी फैमिली को थोड़े दिन नहीं पहचाना था. मुझे क्या हुआ है व्हेन आई वाज इन इंड्यूस्ड कोमा, मुझे पास्ट का कुछ नहीं याद रहता था. आई वाज टेलिंग माय सिस्टर व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हर इन द हॉस्पिटल, ये 2012 चल रहा है ना, तो 4 साल मुझे कुछ याद नहीं था क्या हुआ. सो मैं डायरी के रूप में एक छोटा छोटा लिखती थी. आई यूज टू राइट इट डाउन ऑन कैलेंडर. इतना आज ये हुआ, मनजीत सिंह पुरी जी आए, आज शैम्पेन बॉटल खुली थी, इस तरह से, मतलब छोटा छोटा. जब मैं उसको लिखना शुरू किया तो मेरी मम्मा ने देखा दैट यू नॉट ओनली आर, it's a therapy for you. You not only are accepting it, but you are acting very brilliantly. मतलब तुम उसको different way से देखती हो. She said, write a book. I said, who will read it? She said, you yourself will read tomorrow. And say, मैं यहाँ से यहाँ तक आई, but you write it down. हाथ में पेन पकड़ा नहीं जाता था because of the graphs. मैं कैसे तो करके लिखती थी. There were days when I used to just cry. I could not write one single thing. बिकॉज जैसा इन्होंने बोला, इट वॉज सो डिफिकल्ट. इतना मुझे समझ नहीं आता था मैं उसको कैसे लिखूं. मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं खुद नहीं समझ सकती. कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी हम जा सकते, इतना भी मुश्किल आ सकती है. मुझे नहीं समझ आ रहा था. हाउ वुड आई राइट इट? आई फेल्ट रियली वेरी, इट वॉज अ सेटबैक फॉर मी. बट देयर वर पीपल like Manjeet Singh Puri ji. There were people like Henry Paul. There were people like Alan. There were people like, 100 of them. I said, अच्छा भी तो हुआ है, तो वो क्यों नहीं? So it was a balance of both. To balance कि अगर ऐसा होता है तो ये भी होता है. So that's how I managed to write this all, but in a very brief way. It was indeed very tough for me. It was, लिखते लिखते आप कैसे हो जाते हो, मतलब यू डोंट नो व्हाट टू डू. बट उसके बाद आपको ऐसा लगता है नहीं, मैंने जस्टिस किया, मैंने अच्छा लिखा. आप जब मैं अभी भी कभी मुश्किल में आती हूँ ना, व्हेन आई कम नाउ, तो ऐसा लगता है अगर मैं वो सिचुएशन हैंडल कर सकती थी तो ये क्यों नहीं. सो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग. Nidhi, how should I tell you? Exactly 6 years back, on literally this day, 1 or 2 days here and there, this absolutely horrendous thing happened. और निधि जो यहाँ पर आपके सामने यूं हंस रही हैं, आपको भगवान के बारे में ये चीजें बता रही हैं, she is the living symbol of the kind of, let me say, test that anybody can be put through. And yes, she's spoken of her experience, but I can tell you what her family went through and the beautiful manner in which they coped is another aspect which at some stage perhaps she will talk about. आप लोगों को क्या बताएं, आप शायद समझ नहीं सकते what it means to be in an induced coma. हम लोग नहीं देख सकते थे, इनके हस्बैंड क्या देखते. इट वॉज एज डिफिकल्ट एज दैट. बट निधि, मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूं. आपने यहां भगवान के बारे में बहुत कहा, आपने गुड थिंग्स अबाउट लाइफ के बारे में बहुत कहा, बट आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू फील एनी रैंकर? डू यू फील कि कुछ सिस्टम, कोई लोग, कोई ऐसी चीज, आपने एक छोटा सा रेफरेंस अपनी बात में कहा, and then he pressed the detonator. कभी आपको ऐसा लगा एक किस्म की घृणा about somebody else, शायद आप उसको जानते नहीं, वो कौन है, क्या represent करता है, कभी आपको ऐसा फीलिंग हुई है? I just want to hear from you, because पॉजिटिव तो आपने बहुत कहा, लेकिन अंदर से बहुत थोड़े लोग हैं who have been the victims in the manner in which you were a victim and the way in which you've been able to come out and act as an inspiration
to the most difficult of challenges. I know to all these young children, but to all of us who are your contemporaries. कई लोग पैदा होते हैं जिनको दिमाग संतुलन की प्रॉब्लम होती है. हम उनसे घृणा नहीं करते, प्यार करते हैं. होते हैं ना स्पेशल पीपल. जब मैं उनको फ्लाइट्स पे भी देखती थी ना, मुझे तरस आता था, पर उनको नहीं. पेरेंट्स ने प्राउडली, मुझे लगता था ये कैसे कर सकते हैं. मैं सच्ची में हाथ जोड़ लेती थी कॉकपिट में जाके अपने कि they are the best because they are taking care of such a person, right? Now, having those educated people, I don't know what is in their mind. दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी ना, उनको ब्रेन वॉश नहीं, उनको सोल वॉश करते हैं. ये वो ही कर सकते हैं जिनका ना तो हार्ट होता है, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई रिलीजन होता है. क्योंकि कोई रिलीजन ह्यूमैनिटी से बढ़कर नहीं होता. वो यही सिखाता है भाईचारा, सदाचार, एक दूसरे के साथ प्यार. That's what I feel, that when they do not have the sense to understand what is right and wrong, who am I to give them, because they will not be able to understand where I'm talking from. They do not have that caliber to understand why they are born. They do not have anything. They have only one thing, revenge, end of their life, but they don't understand this. We should give each and everybody, एक दूसरे को चांस देना चाहिए, सुनने का, समझने का. कोई गलत कर रहा है तो रोकना चाहिए. हम करते नहीं हैं, हम रोकते नहीं हैं किसी को. हम सोचते हैं अच्छा गलत है ना, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं, मेरे को क्या फर्क. यही फर्क है. अगर आप स्टॉप करोगे ना आज, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जरूर बदलाव आएगा. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से. निधि, बहुत अच्छा आपने कहा. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड हर बुक एंड आई टेल यू, निधि ने अपने बारे में तो लिखा है, द ट्रिब्यूलेशंस, द ट्रायल्स, द डिफिकल्टीज, लेकिन एक बहुत अच्छी छोटी सी चीज वो हम लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी में, सभ्यता में आज के दिन बहुत अच्छी है. इनका मुंह बोला भाई ब्रसल्स में, नॉट एनी ऑफ अस, नो मेंबर्स ऑफ द इंडियन एम्बेसी, नथिंग. ये लोग तो फ्लाइट लाते थे. एट एनी गिवन टाइम 4 एयरक्राफ्ट जेट एयरवेज के सुबह 7 से 9 बजे तक ब्रसल्स एयरपोर्ट पे रुकते थे. करीब उस पर्टिकुलर दिन 1000 पैसेंजर्स इंडियन थे वहां पर. ये और इनके एक साथी के साथ बहुत इंजरी हुई. वी लॉस्ट अ बॉय इंसिडेंटली. वी लॉस्ट एन इंडियन who has nothing to do with the airport, but was stood on top of the bomb by bad luck in a metro line. It was blasted apart. लेकिन आप नोट करिएगा, ये लोग रेगुलरली ये फ्लाइट जाते थे. निधि ये फ्लाइट इसलिए लेना चाहती थी कि इसके बाद जेट एयरवेज की फ्लाइट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बंद होने वाली थी. वो एक एग्रीमेंट था उस समय का. लेकिन इनका मुंह बोला भाई, जो इन लोगों को होटल में हमेशा मिलता था, इनकी दोस्ती, और इन हर मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड मैनर हस्बैंड का नंबर दिया और उसका नंबर दिया, और वो इनके साथ पूरे 20 दिन लगातार, उससे ज्यादा रहा. निधि, उसके बारे में बताओगा. मेरी फर्स्ट फ्लाइट ना 2006 में लैंड की थी ब्रसल्स में. तो हमें होटल दिया था सेंट्रल में. तभी मेरी बेटी 18 मंथ्स की थी. मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को तब छोड़ा था. मोबाइल तो था नहीं मेरे पास ना, मैं इतना, ये मेरे को तभी वाईफाई इतना समझ नहीं आता था. तो सामने पीसीओ था, तो मैं वहाँ गई, मैंने बात की, तो मम्मा 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 कब आओगे मम्मा. तो मेरा रोना निकल गया. मैं बाहर निकली तो उन्होंने देखा, उनका नाम है शब्बीर भाई, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज सेटल्ड इन बेल्जियम. तो वो बोले, बहन जी ठीक हो ना, बिकॉज मैं आउटफिट हमेशा पंजाबी नॉर्मली, तो मुझे लोग ऐसे देखते थे कि ऐसे पहनती है. तो बहन जी ठीक हो. मैंने कहा हाँ, मैंने बच्चे से बात की, चाय पियो. तब से लेके अब तक मैं उनके साथ हमेशा, जब भी जाती थी चाय पीना, घर पे जाना, हम घूमने भी गए मेरी फैमिली वहाँ पर, तो वो हमको 4 दिन घुमाए. कौन करता है किसी के लिए. 4 days इन देयर कार. हम कहाँ कहाँ गए थे. जब मैं हॉस्पिटल पहुँची ना,
मैंने बोला मुझे नहीं पता जेट एयरवेज से कोई आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे ये भी नहीं पता कि और कौन आ सकता है, लेकिन शब्बीर भैया ज़रूर आएंगे, ये उनका नंबर है। मैंने वहाँ पर, उन्होंने मेरे को एक तस्वीर खींची जो मेरी बुक में है, उन्होंने ही भेजी थी, उन्होंने बोला ज़रूर डालना कि पता लगना चाहिए लोगों को कि ऐसी हालत भी होती है, तो शायद लोग कुछ समझ जाए। उन्होंने बोला कि एक टैग लगा था जिसमें तेरा नाम था, रुपेश का मोबाइल नंबर था और मेरा नाम था, और क्योंकि तूने रिसेप्शन पे ही सबको पता था कि सिर्फ एशिया की एक ही, मतलब जो थोड़ा ये फेयर कलर होते हैं या कुछ, तो उन्होंने बोला एक ही लड़की, जब मैं पता करने के लिए गया कि यहाँ पर ये है, तो उन्होंने बोला शब्बीर भाई, हाँ उसने बहुत जिक्र किया था, आप आइए। तो उनको लगा कि मैं ठीक होंगी, मैं वहाँ जाऊँगी जब भी, तो मैं एकदम से मेरे को ले आएंगे। तो बोला वो टैग लगा था, तो मैं पहचान पाया कि ये तू, पहचान मतलब कि मैं आइडेंटिफिकेशन करते ना कि हाँ ये वही होगी। मेरी सिर्फ आंखों की लिड्स दिख रही थी, बाकी सारा मुझे कवर करके रखा था। वहाँ पर कर्फ्यू लगा था, लेकिन उसने तभी कोई ये नहीं देखा कि मैं यहाँ का हूँ और ये वहाँ की है, या इन्होंने ये किया है, नहीं, उन्होंने ह्यूमैनिटी देखी। सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, मेरे हस्बैंड को बोला मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ, और देख के फ़ोन किया, भाई मेरे जल्दी से आ जा, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। मैंने देख लिया है पर तू जल्दी से आ जा, मेरे पहचान में नहीं आ रही है। So this is what humanity I was talking about, relationships. Thank you so much, ma'am. We would like to open the floor for questions from the audience. If you have a question, please raise your hand. Yes, right there. Cordless. Yes. Yes. Please pass the mic to Kaniz Zehra Razavi, ma'am. Kaniz Zehra Razavi from, I'm a freelance non-fiction editor. I want to ask you one question, and that is, did you at any time in the entire experience feel that being an Indian was in any way good or bad or indifferent to the care that you got? Number one. To the care that you got. I also want to mention to you that your book, which I read in March of 2020 in Ahmedabad during the lockdown, changed my life, because the King of Brussels said, "Can we dare to forgive?" That changed my life. But I want to know whether you felt any kind of difference in the care that you received while you were there. Thank you. नहीं, इसका एक ही शब्द का आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं उस कंडीशन में यहाँ होती तो आज इस मंच पे नहीं बैठी होती, एक बोर्ड लगा होता, निधि चाफेकर सो एंड सो, दैट्स इट। द केयर आई हैव गॉट ओवर देयर, जो उन्होंने किया, उन्होंने सबके लिए इक्वल किया, किसी को नहीं डिस्क्रिमिनेट किया। इवन he had come to see me, and you know what? The hospital people, they were so amazed. They said this hospital was inaugurated by his father, King's father, and he had come, and King has specially come to see you and meet my husband. So that is kind of relationship they built. They were sorry. They wrote a letter to me. They said, until today, even some of the police people I know, they have written so much about. They always find, if you will see my Facebook, it will be a message on, always on 22nd from few people. Sorry, the incident had happened in my country. I'm really 1,000 times sorry. उनको English लिखने नहीं आती है इतनी, French बोलते हैं, Dutch बोलते हैं, लेकिन फिर भी try करते हैं। हम किसी को करते हैं क्या? यही मैं बोलती हूँ कि जगाओ अपने आप को, करो, वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे. So do that. So I have never felt they were so superb, and the king told me that you were very unfortunate that the thing has happened to you, but let me assure you that it was so fortunate that you've been here treated. Wonderful. Smita ma'am has a question as well. I had this question in mind for you. You made such an effort, like you said, you fought for 1 month to get on that flight. So do you ever feel you were at the wrong place at the wrong time, or this was a wrong decision? Did you ever feel, or do you ever feel even now? वो फ्लाइट ना मिस डिसूजा की थी. सर जानते हैं उसको, विकास जी जानते हैं.
that was her flight and she was to get married in October. Till date, she thanks me. She tells me, अगर तू नहीं होती ना, तो शायद ना मैं बची होती, ना मेरी शादी होती, because till today, every person who has met me, who knows me, who know my condition, who has read this book or from my family or from my organization, you know, they've always said, just because she is Nidhi, and I'm not exaggerating on that, she will make it. अब मेरी आंखें नहीं खुली थी. She is Nidhi, she will make it. अगर कोई और होता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे. So it was not a wrong decision, neither a right decision. It was to happen, so it has happened. So I look forward to this, that I saved someone else's life being there. Yes. We can have 2 quick questions from the audience. We are running out of time. 2 quick questions from the audience. Quick questions from audience. Anyone has a doubt? Has a query? I think all of them are so touched by the story. Yes. One gentleman there. Yes. My name is Yash Nagalia. I'm from Sistek University. My question is, do you have any words for the people, the terrorists, any advice or any words for them? If you ever meet them, anything you want to say to them to change their mind or anything? As I said, कि ना तो उनको कुछ समझ आता है, नहीं तो वैसा करते नहीं, लेकिन फिर भी, just because you've also said, let me mention you that, वहाँ एक hearing होती है, क्योंकि 3 terrorists थे जो आए थे, 2 ने ब्लास्ट किया था, तीसरा उनका ब्रदर था, कजिन. उसने 25 kgs RDX हमारे काउंटर के सामने बैग में रखा था. He wanted to press, but I don't know what changed his mind, and he walked off. He's in the jail. I have put an application to meet him and ask him this question, because this is also so, मतलब मेरे को ऐसे कुरेदता है कि क्या चेंज आया होगा, मतलब कहीं कुछ थोड़ा सा उसमें होगा कि वो चला गया, शायद अपनी लाइफ को लेके, मुझे नहीं पता. So एडवाइस मैं तभी दे सकूंगी जब उसका माइंड सेट पढ़ सकूंगी. That's it. Thank you so much, dear ladies and gentlemen. Okay, quick question, please. A quick question and a quick answer. Nidhi, now have you become more daring? Do you take many risks after coming out of this, trauma and being survived so much? मैं ऐसी ही थी, पहले से ही ऐसी थी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. I was like this and that's the reason. My husband, if he is, यहाँ पर ये बैठे हैं, ये गवाह है. वहाँ पर एक लेडी थी जिनके हाथ और फेस बर्न हुआ था, मार्टिन. वो 2 बार मुझे इंडिया मिलने के लिए आई. क्यों? Because I was in induced coma and she was released. और मैंने उसके बाद अपनी आंखें खोली थी. My husband used to tell, जिस दिन इसने आंख खोल दी ना, दुनिया देखती रह जाएगी. You will see her back standing. वो सोचती थी ऐसा क्या है इसमें. She came 2 times to meet me. So I am like that only. अगर तुमने अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया, तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं. रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, यहाँ से उतरने के लिए भी रिस्क लेना पड़ेगा. So if you want to live your life fully, only go with one mindset: positivity. That's it. Everything will be killed behind. Thank you so much. And now I would request the director of Bhopal Literature and Art Festival, Raghav Chandraji, to please go ahead and present a memento to our author and discussants for this session. Zordar taaliyan honi chahiye. As Nidhi ji previously said, the beauty of being a human is to be able to handle each and every situation, and she definitely lives by her words. It was an inspiring story, an inspiring session for all of us. Thank you so much, Nidhi ji. And there is a tribal art painting created by Padma Shri Bhuri Bhai ji based on tribal art. And we also have mugs for our discussants. It was a delight to have Manjeev Singh ji, Manisha Mohan ji and Smita ji with us as discussants for this incredible session. Thank you so much, everyone. And once again, we have a quiz question for all the young minds here.
not for the participants or for the authors and discussants, but for the audience है. A quiz question will be proposed by Raghav sir. जिसको पता हो सबसे पहले हाथ खड़ा कीजिए. A book will be there, Bhopal Nama, as a gift for you. Okay, the next question for the audience quiz. And those who've already answered or won a book need not come forward again. So this is a tricky one. In Frederick Forsyth's book, Dogs of War, who are the dogs? ये थोड़ा कठिन है, तो इसको we will carry it on to the next session. This man stayed in jail. ये आदमी जेल में बहुत लंबे टाइम तक रहा था और उसने एक किताब लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इस व्यक्ति का क्या नाम था? अभी बोलिए मत, अपना हाथ उठा दीजिए पहले. आई वांट टू सी अगर बच्चों में से कोई हाथ उठा रहा है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये अच्छा चलो मैं हिंट दे देता हूं. एक मिनट, आप लोग तो जानते हैं, अभी रुक जाइए. आप लोग तो पढ़े, इन बच्चों को पहले प्राथमिकता दूंगा. बच्चे आपने हाथ उठाया था, बोलिए. हाँ, नहीं नहीं, he was in jail for a long time, Subrata Roy Sahara, but I am talking of a political convict जो अपने देश का, नेल्सन मंडेला, देश का प्रधान, वो भी बना टॉप मैन. आइए आइए, प्राइज दीजिए, अपना नाम बताइए. करेक्ट. Raghavendra Pandey is the winner for the right answer. The book Bhopal Nama by Vartul Singh Ji, the story of Bhopal. Thank you so much, gentlemen. Let us move to the next session. It is surely going to give you goosebumps. An interesting session titled as War and Victory. And I would like to invite on stage Major General R.S. Bhadoria Ji, and he will be in conversation with Ambreen Zaidi Ji and Lieutenant Colonel Anurag Shukla Ji. मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम उनका मंच पे स्वागत करें. If they are here in the room, I would request them to please step up on. The title is War and Victory. Yes, there it is, the poster. The day that changed it all, by Major General R.S. Bhadoria Ji in conversation with Ambreen Zaidi Ji and Lieutenant Colonel Anurag Shukla Ji. Lieutenant Colonel Anurag Shukla Ji couldn't join us due to some reason, so we have Ambreen Zaidi Ji with us as the discussant. And Major General R.S. Bhadoria is an alumnus of Sainik School, Chittorgarh, the National Defence Academy, Kharagwasla, and the Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned as an officer of the Indian Army on 9th June 1984 and joined the Allied Grenadiers Regiment. During his service spanning over 37 years, he has served in almost all parts of the country, including Jammu and Kashmir and the northeastern states, where he was actively involved in operations along the line of control with Pakistan, the line of actual control with China, and counter-terrorist operations. As the discussants, we are elated to invite Ambreen Zaidi Ji. She has been a well-known columnist and author. She regularly writes for national and international publications about the issues which need immediate attention. Her debut book, The Warrior Widows, which was released last month, is being widely appreciated. And yes, I would request you to unfold the conversation. Jai Hind, everyone. Zor se. Good, that's the spirit. Okay, I'll keep it very simple and very informal. What comes to your mind when you think of Kashmir? Beauty. Okay. And? Or kuch? Tensions. Okay. And? Sorry? Vishv ka Swarg. Okay. Very nice. That's so nice to hear about it.
but ये जो विश्व का स्वर्ग है, it has been going through a lot of turmoil. We all know that. All right. And every other day we hear about stories about encounters and the terrorists being killed and our soldiers being killed in action. But very heartbreaking stories, news items that we get almost every second day. So today, this book, The Day That Changed It All, is one book where you will get to hear it from the horse's mouth, from Major General Bhaduria, who in his tenure as the commanding officer of an infantry unit killed 20 terrorists and apprehended one, and dreaded terrorists, मतलब जिन्होंने उस region में तबाही मचा के रखी हुई थी. और look at the, the risk that they took. घरों में घुस के, they knew, his people, his soldiers knew that the house has terrorists, they have the ammunition, but still they went inside, they died in the encounter, but गए बच्चे, they killed the terrorists, because हमें तो खून खराबा नहीं चाहिए ना. आप किसी के भी नाम पे करो, आप religion के नाम पे करो, आप आज़ादी के नाम पे करो, but we want धरती का स्वर्ग वापस, right? We all want peace to return in the valley. So let's give it to General Bhaduria and hear it from him. Thank you so much. I'll go there and roast. Good afternoon, everyone. And Jai Hind. After the last session that we just had, which was so emotionally draining, I thought, will I be able to raise myself to come up and speak to you all? But then, of course, it's a calling, and I thought my story was a great one, but when I heard the last one, I think there can be nothing better than that as far as human will and determination is concerned. So I'll take some time to talk about the book, The Day That Changed It All, what it is about, and what went on in my mind while I thought of this story and experienced this entire thing. Next, please. So this book, The Day That Changed It All, you can see the cover here. Next. Next. Now, what is this book all about? The title initially, which was announced, was War and Victory. While, yes, it is war and victory in some sense, but ultimately it is the story of an infantry unit. And just to put it in correct perspective, an infantry unit or a unit is the basic fighting unit of the Indian Army. And the boss of that is the commanding officer. So this is the story of an infantry unit. And also it is the story of human spirit, of drive and determination, of leadership when your chips are down. It is a storyteller's delight. And of course, the book gives a peek into the operations of Jammu and Kashmir. So why I put these points here is a lot of people ask, what is this book all about? Is it about operations? Is it about leadership? Is it about management? It is everything. Everything that you can think of. Especially people who are interested in military operations, military leadership. I mean, this is a wonderful book for you to read through. Next, please. Now, what was this day which changed it all? This is the first chapter of my book, which says, A Bolt from the Blue. This day was 6th of August, 2002. My unit, 4 Grenadiers, was located in Jammu and Kashmir. We were carrying out counter-terrorist operations in the foothills of Pir Panjal ranges. I was not there. I was posted that time in Punjab during Operation Parakram. If you recollect, Parliament had been attacked in 2001, and the entire army had mobilized to the borders. So I was that time in Jammu and Kashmir, in Punjab, in a headquarters, and this was the event which happened in my unit, where the commanding officer of the unit was shot dead. I'll not go into the circumstances, why and how,
But this happened, and when this happened, the unit went into shock, the morale went low, and obviously there were a lot of issues which happened. The unit per se, which was a very, very old unit, there were apprehensions in their mind because they saw that it's blood on their hands, their entire history, which was very, very great history of theirs, that has come crumbling down with just one incident. So this was the kind of environment which was there on that day. And so that is the day I said it changed everything for the unit, for me, for everybody in that environment. Next, please. Now, this chapter, the second one, why I have called it is that fourth is your destinies. While I was traveling from Punjab back to my unit, I had been called immediately to take over command. A lot of thoughts came to my mind. Because I was commissioned into my unit for Grenadiers, but a lot of things happened in between, because of which I thought I would never be able to even serve in the army for a full tenure, leave alone command my unit. Due to certain medical reasons, I lost a kidney as a young major. Then in operations in the line of control, in firing, I got badly injured on my back and my vertebra was almost gone. I thought I will possibly not be able to even walk again. So similar, a lot of such things were happening. So I thought possibly I will not get even to serve the full tenure. And also, when I got approved for the rank of colonel, so I checked up as to whether I will be able to command my unit or not. So circumstances were such that my predecessor had just completed about 10 odd months in the unit, and it is mandatory for a commanding officer to do 2 years. So I knew that I will not be able to go to my unit. But then this incident happened, and that pushed me to take over the command of my unit. So that is why I said, the destiny told me that yes, this is my unit. I have to go there, get everything back under control, and revive the name of the unit. So that is from where the struggle started. Next, please. Now, these are the challenges that I saw for myself. I've covered some of these already earlier. Next, please. But thus, when I went there, I did see light on the horizon. And that light on the horizon was that for the name of the unit and for Izzat, a unit would do anything. And that was my start point, a positive point, that yes, we will all work through and come out of this and get the name of the unit back. We'll fight through all this. Youthful composition of my unit, of course, was another positive. I had very vibrant officers, young officers, who would again take on anything. So with all these positives, I thought, let's move ahead from here and take the unit back to its old glory. Next, please. Now, while I was thinking all this, a quote came to my mind, because from the day the incident happened until the time I reached my unit, it took about 4 or 5 days. So one of my officers, immediately senior to me, called me and told me that, look, Ravi, all that you need to do is bring the smiles back to the faces of the Jawans. If you have done that, half the battle is won. So this was the start point to get the smiles back to where they belong. Next, please. Yeah. So hereafter started, of course, the action to soothe the nerves. Because as I told you earlier, there are a lot of apprehensions, a lot of things in the mind. What will happen to the unit? Will the unit get, suspended? Will there be punishment? And all those kinds of things are going on in the mind. So there was the immediate requirement to soothe the nerves of everyone, of the troops themselves, of the environment which is around, of the officers of the unit who were there outside, and there was a need to connect to them. There was a need to reassure the troops, to tell them, yes, I'm there, main hoon na. So that was required to be done. Long term, again, a lot of measures were to be taken. One of them was to establish yourself once again in your operations to get certain successes, because every small success leads to bigger successes, and
ultimately, once you start winning, once you start succeeding, then nothing stops you thereafter. So to start with small steps, and then establish yourself as a unit. The credibility of the unit was to be established as a long-term measure. Next, please. While all this was happening, it was already about month and a half when I had, by the time I had taken over. But things kept on going bad to worse. The 2-3 incidents which happened, I thought, as a commanding officer, I will take control of everything and everything will be all right. But then the things kept on happening in a manner that I was wondering when will this slide halt? When will we be able to come up ever again? So 3 incidents that I've highlighted here is, in one of the operations, the young officer, Captain Chandra Chaudhary, he went for an operation. We did plan well, but the terrain in J&K can be very, very punishing. And that is where we learned this hard lesson. And this operation, though we did a lot of things, right, wrong, whatever you can now say, but we lost this young officer and a couple of more people. So this was right from in the beginning of my tenure there, one of the very, very poor experiences which I had of my command. Then, of course, 2 more incidents wherein in a neighboring school about 2 kilometers from my headquarters, terrorists attacked that school, took out 2-3 persons of a particular community along with the teacher, shot them and ran away from there. At that point of time, I thought the response could have been slightly better. Anyway, we took them on later on and killed all those terrorists later on. That's a different thing. But at that point of time, we failed in getting those terrorists at that point of time. And then, of course, there were certain elections going on. In those elections, the CAPF cordon, which was there right just outside the booth, the terrorists came and took away their LMG. Overall responsibility was ours. So this again I thought as a failure on our part. So with all these things happening, I was wondering as to what will happen now. When will we ever be able to get our name back and regain the confidence of our formation commanders? So while all this was happening, I then one day sat down, I had a very disturbed mind, and next 2 hours I wrote down a letter for my command, for my officers. That letter is about 6 to 7 pages. I took about 1.5 to 2 hours. But that letter conveyed my heart out. In that letter, I wrote down what were my observations with respect to what was going wrong in conduct of operation, the tactics which they were using, and whatever I had to write, I just poured my heart out and sent that letter to all my officers. Now, whether this is a coincidence or whether the effect of the letter, next 10 days, we started having a success and our graph just kept going up thereafter, never looked back. So I don't want to bore you with the details of the letter right now. You can read it in your own time. Go next, please. Next. Yeah. Sorry. So this was the turning point. अभी बदलाव मैंने कहा कि बदलाव शुरू कैसे हुआ. So this was one operation where again there was a patrol which was going for certain operations at night. They saw some activity, suspicious activity in a house. और वो suspicious activity देखने के बाद में मेरी जो पेट्रोल थी उन्होंने घर को उसको सराउंड कर लिया और सराउंड करने के बाद में कॉर्डन लग करके उसको चेक करना शुरू कर दिया. फायरिंग शुरू हुई, फायर फाइटिंग हुई और मैं रेडियो पे मॉनिटर कर रहा था क्या हो रहा है. वो सब चलता रहा और रात को ये सब हुआ और वी थॉट के वी विल बी एबल टू सक्सीड हियर. देयर वाज वन पर्सन हु वाज मैनेजिंग द लाइट मशीन गन. दैट पर्सन kept on firing at the door of the house in which the terrorists were supposed to be there. I'm not going through the details of the entire incident, but in the morning, when we started checking everything,
वी रियलाइज कि हमारा एक हवलदार जो था वो मिसिंग हो गया उस समय, वी कुडंट फाइंड हिम। तो सुबह जब ऑपरेशन पूरा हमने वाइंड अप किया, ख़त्म किया, तब हमें पता चला कि उस घर के अंदर हवलदार ज़हूर एक जो था हमारा, वो वहाँ पर शहीद हो चुका था, और साथ में एक टेररिस्ट भी वहाँ पर मर चुका था। उसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वैसे कहना नहीं चाहिए कि स्कोर नहीं है फुटबॉल का कि 1-1 हो गया तो बराबर हो गए, लेकिन ऐसी जब सिचुएशन होती है, जब आप यूनिट को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप ये स्कोर देखने लगते हैं, ये चीज़ देखने लगते हैं कि ठीक है हमारा एक गया तो उनका भी हमने एक लिया। तो दिस वाज अ पॉइंट वेयर आई थॉट कि our recovery had started, and after that of course there's no stopping us. Next please. Now hereafter we had continuously 3 to 4 operations over the next 2-3 months, और उन 2-3 महीनों के अंदर हमने 10 टेररिस्ट को ख़त्म किया, और उनकी डिटेल्स में भी अभी नहीं जाऊंगा। बहुत ख़तरनाक तरह के टेररिस्ट थे, और कम से कम 6-7 टेररिस्ट वो थे जिन्होंने स्कूल के ऊपर हमला किया था, जहां उन्होंने टीचर और बच्चों को मारा था। वी वर एबल टू किल ऑल ऑफ देम एंड टेक एंड अवेंज दैट इंसिडेंट एंड द लॉस ऑफ लाइफ्स। So this was a good success that we had over the next about 2-3 months. How we did it, I will not again go into the details, but basically what we were doing was we were carrying out a lot of operations with lot of intelligence. हम हर जगह खबर लेते थे पूरे एरिया का, कि हमने मैपिंग कर रखी थी, और जहाँ से भी कोई खबर मिलती थी हम फटाफट एक्शन करते थे, और तब तेज़ी से करते थे। उसके लिए हमने तरीके किए हुए थे छोटी छोटी टीम्स में, और इससे पहले कि टेररिस्ट वहाँ से निकल पाए वी शुड बी देयर। और हम ऐसे ऐसे इलाकों में ऑपरेट करते थे जहाँ लोगों को लगता ही नहीं था कि कोई फौज पहुँच पाएगी, एंड दैट वाज द एक्चुअल रीजन फॉर आवर सक्सेस इन दीज काइंड ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज समथिंग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑपरेशन एंड माई फेवरेट फोटोग्राफ। ये एक ऑपरेशन है जिसमें हमने एक टेररिस्ट को मारा था जिसका नाम था अबू हुरैरा। अबू हुरैरा उस इलाके के अंदर उसने बहुत दहशत फैला रखी थी, और उसको एक फैंटम की तरह लोग समझते थे कि ये इसको कोई ना देख सकता है ना मार सकता है। तो हमें सिर्फ खबर मिलती थी कि अबू हुरैरा फलाने घर में फलाने गांव में है। हम जब तक पहुंचते थे, घेरते थे, वो निकल जाता था। 6 महीने तक हम कोशिश करते रहे, हम उसको नहीं पकड़ पाए। बट हमने डिसाइड कर रखा था कि अबू हुरैरा को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने बहुत लोगों को परेशान किया था, बहुत लोगों को मारा था। तो लास्ट में हमको एक खबर मिलती है कि कई सारी खबरों के बाद में कि अबू हुरैरा ने किसी से ऑलरेडी शादी कर ली है, और वो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर फौज कभी नहीं जाती है, बियॉन्ड जंगलों के पार। तो देन वी हैड टू ऑर्गेनाइज एन ऑपरेशन, अ कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन क्या होता है? नॉर्मल फौज की वर्दी में हम नहीं जाते हैं, जैसे टेररिस्ट दिखते हैं टेररिस्ट की वेशभूषा के अंदर, टेररिस्ट की तरह से उनकी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ में। तो ये हमने एक ऑपरेशन प्लान किया विद 10 मैन, 10 लोगों की स्पेशल टीम, और ये जाते हैं। अगेन मैं उसका ऑपरेशन की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा यहाँ पर। ये उस इलाके में पहुँचते हैं, और बिल्कुल मुंह अंधेरे सुबह सुबह जो है अबू हुरैरा को ये ढूंढ लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ये अबू हुरैरा यहाँ पर उसकी समाप्ति होती है, और उस इलाके के अंदर जो आतंक जो था, जो डर इसने फैला रखा था, उसको हमने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए हमने इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस जनरेट करने के लिए हमने उस समय 50,000 रुपये का इनाम रखा था, और 2002 की बात है ये। उस समय 50,000 रुपये काफ़ी होते थे। तो उस 50,000 रुपये की एवज में हमें वो खबर मिली जिस खबर का हमें इंतज़ार था, और उस खबर को हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उसको अंजाम दिया। इस फोटो के अंदर सारे वो टेररिस्ट के वेश में हैं, बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल लेफ्ट साइड में डॉक्टर हैं जो मेरे साथ में उस समय थे। हम ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच गए थे। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरह से हमारा ये ऑपरेशन सक्सेस हमारी होती रही, और जैसा मैंने कहा कि शुरू में कहा था कि अगर हम ऑपरेशनली सक्सेसफुल रहे, मोराल बढ़ेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो हमारे ऊपर कमांडर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनको हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए हम ऑपरेशनल सक्सेस के ऊपर हमने बहुत जोर दिया, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे।
Now, this is the time जब हमारा टेन्योर वहाँ ख़त्म हो रहा था. हम ऑलरेडी फील्ड के अंदर 5 साल कर चुके थे. नॉर्मली 2 से 3 साल का टेन्योर होता है, लेकिन उस समय पराक्रम की वजह से सबका टेन्योर बढ़ गया था. हम 5 साल से वहाँ थे फील्ड के अंदर. तो ऐसे में हमारा पीस स्टेशन के अंदर हमारा मूव होने वाला था, उसकी भी तैयारी चल रही थी. तो जब ये तैयारी होती है पीस स्टेशन के लिए, तो ज़्यादातर कमांडर सोचते हैं कि भाई अभी यूनिट ढीली हो गई है, अभी ये तैयारी कर रही है, अभी ये ऑपरेशंस नहीं करेगी. लेकिन हमने अपना ऑपरेशनल कमिटमेंट जो फोकस था उसको आखिरी दिन तक रखा अपने साथ, और वो छोड़ा नहीं. उसका ये अंजाम था, उसका ये रिजल्ट था कि लास्ट जो दिन था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का उस इलाके के अंदर, उस दिन हमने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन किया. और हमारा इलाका था पहाड़ियों के अंदर, बहुत दूर था वो. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो पहाड़ी इलाका था, कम से कम 5-6 घंटे चल के जाना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए, अब पैदल पहाड़ों के अंदर, हाई एल्टीट्यूड वगैरह के अंदर. तो वैसी हालात के अंदर हमारे ट्रूप्स गए और उन्होंने एक ऑपरेशन किया, और 5 आतंकवादी एक दिन में ख़त्म कर दिए. तो जब ये हुआ तो हमारे जो हायर हेडक्वार्टर्स थे, उनका ये कमेंट था, यू पीपल आर ग्रेट, बिकॉज इवन द लास्ट डे of your responsibility, you've been doing your thing in the best possible manner. So this was our last hurrah when we killed 5 terrorists out there. And as Amreen said, we went out with killed 20 terrorists and apprehended 1 after 1 odd year of operations there under my command. Next, please. After this, of course, we moved to the peace station. So now the story changes from operational responsibility to the life in a peace station. Now, life in a peace station is different. In an operational area, your performance is judged by your operational success. In a peace area, it is your contribution to the station matters. It is your sports competitions, how you perform there. It is your performance in various training events, training competitions, etc., like firing competition and various other competitions. So now this is a big challenge again. 5 साल फील्ड में काटने के बाद आप पीस में आ रहे हो, आपके पुराने स्पोर्ट्स टीम खत्म हो गई हैं, आपके दूसरे आपके जो प्लेयर्स वगैरह हैं या फायरर्स वगैरह हैं, वो रिटायर हो गए हैं, तो आपको सब कुछ नया बनाना पड़ेगा. तो the focus was to rebuild all these teams, rebuild all these people, and then start again. So with this challenge we started off, and I dare say over the next 2-3 years we were the best unit in the formation. But in spite of having done well in operations there, having done well in the peace station, there was a comment from a very senior officer, oh, it's the same unit that killed itself. So, you know, तो कहने का मतलब यह है कि हमने इतना परिश्रम किया अपने नाम को ऊपर लाने के लिए ऑपरेशनल एरिया में, सक्सेसफुल भी रहे. पीस स्टेशन में वी वर द बेस्ट यूनिट. कोई चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन हो, किसी भी तरह के वेपन की फायरिंग का कंपटीशन हो, कमांडो कंपटीशन हो, ऑब्स्टिकल कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो, हमने कहीं हम पीछे नहीं रहे. बिकॉज एज अ यूनिट वी वांटेड टू प्रूव दैट वी आर द बेस्ट. लेकिन फिर भी हमें यह सुनना पड़ा, ओ इट्स द सेम यूनिट व्हिच किल्ड इटसेल्फ. इसका मतलब हमें और काम करने की जरूरत थी, और हम वो काम आगे भी करते रहे. नेक्स्ट प्लीज. नाउ एज आई सेड, पीस स्टेशन में आ गए, नया बिल्कुल सब कुछ माहौल है वहाँ पर. 5 साल के बाद आए लोग, जवान टर्नओवर हो चुके थे काफ़ी कुछ. उनको सारी यूनिट्स के जो ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स होती है पीस टाइम की अलग होती है, गार्ड ड्यूटी, सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ वगैरह, उसके लिए सबको दोबारा तैयार करना था. वो सब करने में और दोबारा रीट्रेन करने में बड़ा टाइम लगा. तो दैट इज व्हाई आई सेड बैक टू बेसिक्स. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट दैट. नेक्स्ट प्लीज. नाउ व्हाइल वी वर डूइंग ऑल दिस, a new fresh development was taking place in the northeast. वहाँ पर भूटान के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा था टू फ्लश आउट द टेररिस्ट. जो उल्फा के टेररिस्ट थे और एनडीएफ के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने भूटान के अंदर कैंप्स बना रखे थे, और उन कैंप्स के अंदर से वो असम में आकर के अटैक करके भाग जाया करते थे. तो उस समय इंडिया और भूटान की सरकार के बीच बातचीत हुई, और भूटान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सारे कैंप्स को हम खाली करेंगे और उनको भगाएंगे टेररिस्ट को. वहाँ उनको फ्लश आउट करने का ऑपरेशन था.
So that was the time we were in Ranchi in a peace station. So from there, from all the way from Ranchi, we were moved to Assam to participate in this operation to flush out those terrorists from Bhutan towards India. And when they were coming into India, like a net, we were supposed to get them. And that's what we were doing there. So we did that for about a month and a half, and then we again got back to Ranchi. Next, please. Now, here, after all this, a very, very important event that all infantry, all units have in peace stations is celebration of their Battle Honor Day. Now, we celebrate our Battle Honor Day in memory of Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid, who was awarded Paramveer Chakra in 1965 war. Paramveer Chakra इनको मिला था 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की 1 आर्मर्ड डिवीजन ने जो हमला किया था अपने पैटर्न टैंक्स के साथ में अमृतसर की तरफ आ रहे थे, तो अब्दुल हमीद और हमारी यूनिट ने उस डिवीजन को वहीं पर रोक दिया था, उनके टैंकों को वहीं पर रोक दिया था, जिसकी वजह से यूनिट को बैटल ऑनर असल उत्तर मिला और अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिला. तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इस चैप्टर में मैंने इस पूरे ऑपरेशंस के बारे में लिखा है, 65 में क्या हुआ था और सेलिब्रेशन हम किस तरह से करते हैं, क्या माहौल होता है. हमारे लोग जो पुराने लोग आते हैं, पुराने ऑफिसर जेसीओ जवान, वो कैसे हमारे साथ मिलते हैं, कैसे वो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो एक तरह से ये एक मिलन होता है जो हर 2-3 साल में हम लोग करते हैं. तो ये उसके बारे में ये चैप्टर पूरा हमने लिखा है. नेक्स्ट प्लीज. इसके बाद में 2-3 चैप्टर हैं. इसमें 2 चैप्टर खास तौर पे यहाँ पर फीडबैक एंड ग्रूमिंग ऑफ द यंग ऑफिसर्स. अब पीस में आ गए हो आप, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसको फीडबैक आपको कैसे लेना है उसका हमने एक तरीका लिया था. जवानों से फीडबैक कैसे लिया जाए कि सही है गलत है क्या करना चाहिए, तो वो मैंने इसमें लिखा है. मैं उसके बारे में अभी डीप ज़्यादा नहीं बताऊंगा. ग्रूमिंग ऑफ ऑफिसर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लीडर्स बनाने हैं, अगर आपको मोटिवेटर्स बनाने हैं, अगर आपको टीम बनानी है, तो आपको उनको ग्रूम करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा. सो दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैड टेकन ओवर इन अ पीस स्टेशन. फील्ड में ऑपरेशन में टाइम नहीं मिलता ग्रूमिंग का, पीस स्टेशन में वो टाइम होता है. उस टाइम का मैंने इस्तेमाल किया टू ग्रूम माई ऑफिसर्स. एंड आई एम प्राउड टू से दैट मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स हु वर देयर हु जॉइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, they are either commanding officers or doing very well in their life. So I think that that's a great achievement as far as my personal thing as a commanding officer of that time goes. Next please. So ultimately, you know, we started with that thing that I have to put the smile back where it belongs to. And at the end of my tenure of nearly 4 years in the unit, which is again uncommon. Normally you command for 2.5 years. I got to command for 4 years. That was a privilege that I got. But advantage was that I was able to put the smiles back to where they belong. Thank you. Thank you so much, General Bhaduria. And we heard your story. हम सबने सुना, and all of us will read your book as well. Is there anything that you would like to change? Any change that you would want? आपने सवाल किया कि क्या मैं कुछ बदलना चाहूँगा उस समय जो हुआ था उस वक्त का. Yes, मैं चाहूँगा, बहुत कुछ बदलना चाहूँगा. But it's not easy. And actually, if I look at it philosophically, whatever happened had to happen. और मैंने जिस तरह से किया, I had put my soul and heart into everything. मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर कर पाता. उसके बावजूद भी कई गलतियाँ हुई. We lost a young officer. We lost 2-3 more lives. That regret will always be there. कि शायद मैं कुछ बेहतर करता तो शायद हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कुछ हो पाता, क्योंकि वो ऑपरेशंस इस तरह के होते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता है. आपको रिस्क उठानी पड़ती है. एंड व्हेन यू टेक रिस्क, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज. And we are running short of time. बहुत कम वक्त है हमारे पास. And last, I want to ask you कि there will be many young children here who will be highly motivated आपका सुन के the story of your unit. So any message for them? Yes.
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक छोटे से शेर कहूँ या कुछ भी लाइन कहूँ, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटना के बल चलें। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, गिरोगे भी, पड़ोगे भी, चोट भी लगेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। Chaliye, so we have the, okay, yeah, we'll start with Mr. Vaklu. Yeah, General Bhadoria, I'm really impressed with the beautiful you, exposition. I have just one question. Could you just share with us what were the high points of the letter that you wrote to your officers? I'm curious to know what may have been the high points, please. Okay. Buy the book. I'll cover some of these. While, you know, she's acting as my marketing person. Okay. I first, you know, I write to them that, yes, I've been observing all this and I'm disappointed at whatever has been going on. And it's a loss for all of us. And then I go on to describe as to what mistakes are they committing. For example, the knowledge of the terrain was not proper. They needed to operate more often. They needed to create more intelligence, get involved with the people, make friends with them, work for them, and you know, get their faith. And that is when you can operate better in those areas. And then I go on to describe what tactics, you know, they need to make use of. A lot of tactical mistakes the soldiers are making while in cordon and such, you know, like using lights or standing out on terraces or things like that. A lot of these small things I pointed out to the soldiers that these are the kind of mistakes that you're making. If you don't make these mistakes, maybe things will be better. And then I also talked to them, I wrote to them about the importance of small team operations. Small teams are like, you know, bloodhounds. Bloodhounds, they work in small teams, and when they see a target, they all converge at one place. So I told them to work like that. So these are some of the things that I've highlighted in that letter. Thank you so much, Bhadoria ji. Yes, ma'am. And I must share with you, just before he was about to write that letter, he has written here in the book, the world expects results. Don't tell others of labor pains. Show them the baby. Absolutely. Indeed. Thank you so much, ladies and gentlemen, for that wonderful discussion. I would like to now invite the director, Raghav Chandra sir, on stage to felicitate our guests for this session. And it was an intriguing session. Thank you so much, Major General Bhadoria ji and Amreen Zedi ji, for that wonderful conversation and presentation. And we'll be presenting a beautiful painting that happens to be the mascot of BLF 2022, a beautiful tribal art painting made by Padma Shri Bhuri Bhai ji as a symbol of our respect, love and gratitude towards the author and the discussant. बहुत ही दिलचस्प बातचीत रही. The day that changed it all. Thank you so much, gentlemen. And yes, a quiz question once again. Okay. So those who have won should not try and win another book. So this is a question which I'm carrying over from the previous session, but I'll ask another new question. In Frederick Forsyth's book, Dogs of War, who are these dogs he's referring to? Second question, the British Prime Minister Margaret Thatcher gave away the Gyanpith Award to this famous Hindi poet and writer in the early 80s. Who was this famous Hindi poet and writer who received the highest the Hindi literature award from
the Prime Minister of Great Britain. Okay, I'll give you a hint. This ceremony took place in Delhi, not in England. Any guesses? मार्गरेट थैचर ने दिया 1982 में जब वो इंडिया आई तो उन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड, चलिए और सरल कर देता हूं, इस प्रमुख भारतीय कवि और लेखक को अपने हाथों से समर्पित किया। चलिए अब मैं आंसर बता देता हूं, दोनों सब या इनको कैरी ओवर करें नेक्स्ट सेशन के लिए। कैरी ओवर सोच लीजिए, गूगल पर सर्च करिए, शायद आपको आंसर मिल जाए। ऑलरेडी सर्च कर लिया, बताइए। करेक्ट, गेट द प्राइज। Karan is one of the volunteers. Yeah. अपना नाम जल्दी बता दो करण, पूरा। Ratanjit Kanojia. Karan seems better. Great. Thank you so much, gentlemen. Let us quickly move to the next session. The title is interesting. The title is Off the Camera. And as the author, as the guest, we have Mr. Rajesh Rajputji, and he is going to be in conversation with Sharad Dwivedi ji. मैं चाहूंगा इन दोनों हस्तियों का हम मंच पे स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ. Rajesh Rajputji in conversation with Sharad Dwivedi ji. The title of the book and the session is Off the Camera. Rajesh Rajputji is a senior special correspondent with ABP News since 2002. Back then it was known as Star News. He has an experience of more than 3 decades in the field of journalism. He has been awarded Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award in 2017, the ENBA Award 2021, Mumbai Press Club Red Ink Award in 2013, Dainik Bhaskar Award in 2016, and Media Excellence Award in 2012 from Delhi. The book Off the Camera के बारे में author कहते हैं कि टेलीविजन की छोटी स्क्रीन पर दिखने वाली हर कहानी के पीछे एक बड़ी कहानी होती है, जिसे कवरेज करने गया रिपोर्टर अपनी नजर से देखता है. यह किताब ऑफ द कैमरा में कोविड के दौर पे दुख संताप की दर्द भरी कहानियां हैं, जो 2 साल पहले कमलनाथ सरकार के गिरने और शिवराज सरकार के चौथी बार बनने की उठापटक के करीब से देखते हुए किस्से और कहानियां हैं, जो आपको न्यूज में भी देखने नहीं मिलेंगे. और डिस्कशन के रूप में हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं शरद द्विवेदी जी. बीते करीब 2.5 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय श्री शरद द्विवेदी जी ने सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की. दैनिक जागरण, फ्री प्रेस और बाद में समाचार एजेंसी यूएनआई की हिंदी सेवा वार्ता में करीब 14 वर्ष तक जुड़े रहे. 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेल और 2012 में बीजिंग ओलंपिक के लिए उन्होंने डीडी स्पोर्ट्स को अपनी सेवाएं दी. वर्तमान में द्विवेदी जी बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं और उसी रूप में कार्यरत हैं. और इस चैनल ने बहुत ही कम समय में राज्यों में नंबर 1 रहकर एक कीर्तिमान हासिल किया है. और हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं. मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये बेहतरीन सेशन की शुरुआत की जाए. जोरदार तालियां होनी चाहिए. लेट अस बिगिन द वंडरफुल कन्वर्सेशन, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन. बहुत शुक्रिया आपका. और बेहिचक इस सत्र की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं. और मेरे साथ एक ऐसे मित्र भी हैं मेरे, और पत्रकारिता में ज़रूर हमारे विश्वविद्यालय में हमारे सीनियर, उम्र में मुझसे छोटे, और एक ऐसे जर्नलिस्ट. अभी मेजर जनरल आर.एस. भदौरिया साहब से पूछा गया कि वो क्या कुछ बदलना चाहेंगे. एक पत्रकार के पास ये मौका होता है कि वो चीज़ों को देखने के अपने नज़रिए में, अगर वो कैमरे से कैद कर रहा है खबर को, तो वो लिखने से उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है. जो नज़रिया उसके एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक है, वहाँ जो गया है नज़रिया, वो नज़रिया जब वो निजी तौर पर लिखता है तो वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है,
भिन्न होता है। ब्रजेश एक ऐसे ही जर्नलिस्ट हैं जो अपने स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इनके अवार्ड्स बताते हैं कि इन्होंने कितने तरीके से वहाँ काम किया है। सलीका, नफासत, इफ़िशेंसी, तमाम चीज़ों को लेकर ये आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके साथ इन्होंने अपनी राइटिंग स्किल से ये बताया है कि मैं एक राइटर के तौर पर चीज़ों को किस तरह देखता हूँ। तो ये बदलाव इन्होंने किया। प्रतिदिन लिखना आसान नहीं। कभी गुलजार के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मैं रोज़ 1 से 1.5 घंटा, कई बार 2 घंटा लिखने बैठता हूँ। कई बार पूरे समय थॉट नहीं आते, कलम और कागज़ सूखे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं अपनी टेबल को छोड़ता नहीं हूँ। आप यंग जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके लिए ये है। कई बार आपको लगेगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। रियाज जिसको हम कहते हैं, प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, उसको करिए, उसको करते रहिए। ब्रजेश रोज लिखते हैं। रोज लिखना आसान नहीं है। पत्नी की आंखें, मैनेजमेंट की आंखें, सोसाइटी की आंखें, बच्चों की एक्सपेक्टेशन, और इसके बीच में कलम थामे या कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ एक लेखक। 5 किताबें ये बताती हैं कि टीवी का जर्नलिस्ट, जिसके लिए 2010 के आसपास की वो किताबें मिलते हैं ब्रेक के बाद, शायद 2010, हाँ, ऑफ दिस की, हाँ, जो टीवी के जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसमें उन्होंने एक नाम दिया था। देखिए खुद का रेट्रोस्पेक्शन कितना जबरदस्त होता है। टीवी रिपोर्टर के लिए दिल्ली के जो नामचीन टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उस समय कई अपकमिंग थे, यंग थे, उन्होंने कहा 2 बाइट का आदमी। ये टीवी जर्नलिस्ट के लिए खुद टीवी के लोगों ने क्वाइन किया शब्द है। इस शब्द में कोई डेरोगेटरी सेंस नहीं है, सिर्फ एक बहुत गहरा आत्मविश्लेषण है कि हम इतनी आपाधापी में होते हैं कि हम सिर्फ बाइट के लिए हमारी पूरी मारामारी और जद्दोजहद होती है। लेकिन उसके बीच में अगर ब्रजेश और इनकी एक किताब लेके मैं बैठा हूं, तो मुझे लगता है आपको तालियों से इसके लिए तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रजेश की किताबें मैंने जब पढ़ी तो मैंने ये भी महसूस किया कि उसमें विद्वता हमारी तरफ ढकेली नहीं जाती। कोई ज़रूरी नहीं है मैं हर लेखक ये करता है, या कई बार ज़रूरी होता है करना, लेकिन ब्रजेश एक किस्सा गो की तरह आते हैं। वो उन चीज़ों को देखते हैं जो आसपास हैं, और कई बार जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, वो अपनी राइटिंग में वो लेकर आते हैं। जैसे करेली का एक सिनेमा घर, आप बच्चों के लिए जो मल्टीप्लेक्स और OTT प्लेटफॉर्म की जनरेशन के यंगस्टर्स हैं, आपको पता होगा कि कभी किसी छोटे कस्बे में एक सिनेमा घर होता है। ये वंस अपॉन अ टाइम की बात नहीं है, ये अर्ली 90s की बात है। ये प्रेमचंद की कविता कहानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि उस टाकीज में लड़कियां और महिलाएं अलग बैठती हैं, जिनका जिम्मा एक बड़ी असरदार महिला संभालती है, बुजुर्ग, और जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर सपना होता है ब्रजेश का भी कि बड़े होकर मैं ये बनूंगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कोविड से जुड़े हुए हमारे आसपास के किस्से हैं। फर्स्ट पर्सन की कई दिलचस्प ऐसी दर्द से भरी कहानियां हैं। एक शिक्षिका का दर्द है जो नियमितीकरण की जंग लड़ रही है, और वो किस तरह दूर दराज के एक ज़िले से भोपाल आती है और अपनी बात कहती है। 5 किताबें इनकी कलम से निकल चुकी हैं। ब्रजेश, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सबसे पहले तो मैं, आप थोड़ा सा हमारे साथ इसी रहस्य को उजागर करिए कि रोज़ लिखना और टीवी के जर्नलिस्ट की मुश्किलात, पेचीदगियों के बीच में 2022 में कसम से मैं तो कह सकता हूं बिल्कुल आसान नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने राघव चंद्रा साहब का, जिन्होंने इतने बहुत सुंदरता से इतने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ा देरी जरूर हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत लंबे समय बाद हम सब लोग आपस में ऐसे मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबों की चर्चा कर रहे हैं। और गुलजार की वो लाइन है कि किताबें अब बातें नहीं करती, अलमारियों में बंद रहती हैं, मगर आपने कोशिश की है कि किताबें उन अलमारियों से बाहर आएँ। तो ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। और
शरद जी, मैं आपकी बात करूंगा कि बेसिकली सागर में हम लोग कम्युनिकेशन के स्टूडेंट थे, और कम्युनिकेशन मतलब अपने आप को व्यक्त करना। और दरअसल मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय विधा जो है वो है किस्सा गोई, और हम सब के पास ढेर सारे किस्से होते हैं। यदि मैं जर्नलिस्ट हूँ, टीवी का जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। यदि आप ऑफिसर हैं तो आपके पास बहुत सारे किस्से हैं। यदि बच्चे हैं तो उनके पास भी बहुत सारे किस्से हैं। बस उन किस्सों को व्यक्त करना आना चाहिए। और चूँकि हम टेलीविज़न के लोग हैं तो रोज़ भागते दौड़ते हैं, रोज़ हम लोग को कहानियाँ करनी होती हैं। रोज़ कहानी सुबह तय होती है, दोपहर तक देनी होती है, और शाम को टीवी के पर्दे पे चलती है। शायद इस भागा दौड़ी में आप जानते हैं, संपादक हैं, कि बहुत, चूँकि हम लोग एक डेडलाइन होती है और टाइमलाइन भी होती है। वो कहानी हमारी होती है 1 मिनट की, वो 1 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 30 सेकंड की, 45 सेकंड की, उस सब में हमको अपनी सारी बात कहनी पड़ती है। मगर उस कहानी को कहने के लिए हमको सफ़र तो उतना ही लंबा करना पड़ता है। चाहे हम यहाँ से कोई एक्सीडेंट के लिए शिवपुरी जाएँ या गुना जाएँ, कहीं भी जाएँ, उतना लंबा ही सफ़र है, उतने ही लोगों से बातचीत करना है, वो सारा दुख दर्द तनाव झेलना है, देखना है, और उसको अपनी कहानी में व्यक्त करना है। तो कई दफ़ा हम समय की सीमा के चलते टीवी वाले उस सबको बता नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समय की बड़ी किल्लत होती है, तंगी होती है। तो सोचा क्यों ना हम इन सारी कहानियों को लोगों को बताएं कि बहुत कुछ हमसे छूट गया है। या फिर ये कि एक मकसद ये भी था कि हम जो टीवी के लोग हैं, जिनको लोग, आपने कहा कि इसे बाइट कलेक्टर्स माना जाता है, कि बस 2 बाइट ले आए और कैमरे के सामने खड़े होकर बला 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 बोल दिया और हम सब टीवी रिपोर्टर बन गए। मगर नहीं, हम टीवी रिपोर्टर इससे अलग हैं। हम टीवी रिपोर्टर वहाँ जितना दुख दर्द है उस सबको महसूस करते हैं, वो सारी संवेदनाओं के पास जाते हैं, करीब से उसकी तह में जाते हैं। यहाँ पे अनुराग द्वारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ करते हैं, कहानी के अंदर कहानियों में घुसते हैं, बुनते हैं, उसको फिर लिखते हैं। तो ये हमारा काम है। तो मगर वो हमारा काम बेहतर तरीके से कई दफ़ा हम लोग अपनी स्टोरी में नहीं दिखा पाते, तो सोचा क्यों ना उनको लिखा जाए। और यहाँ एक सुबह सवेरे करके अखबार था, उन्होंने जब मुझे लिखने का मौका दिया तो मैं वीकली कॉलम शुरू किया, और तकरीबन 2.5 साल तक मैं हर हफ्ते उस कॉलम को अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद लिखता रहा। कभी मोबाइल पे टाइप किया, कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो टाइप किया, कभी फ़ोन से लिखवा के टाइप किया। तो बहुत सारी जब कहानियों के किस्से हमने देखे और सोचा कि यार ये तो बड़ी वैरायटी है इसमें, तो क्यों ना इसका संकलन किया जाए। और मेरे जो पब्लिशर हैं, मंजूर पब्लिकेशन के विकास जी, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बेहतर किताब हो सकती है। तो जब वो पहली किताब आई ऑफ द स्क्रीन, तो लोगों ने उसको पढ़ के कहा कि ये वो किताब है कि जिसको पढ़ के आप बदल जाओगे इस सेंस में कि आप टेलीविज़न जर्नलिस्ट को इज्जत की नज़रों से देखने लगोगे कि ये कितना मेहनती आदमी है यार, कितनी भागदौड़ करता है, कितनी चुनौतियां झेलता है, कितने डंडे खाता है। जब वो हिंसा करने वाली भीड़ जब पुलिस को डंडे मारती है, पुलिस को पत्थर मारती है, तो वो किसी को नहीं देखती। फिर वो जब पुलिस उसको मारती है तो मीडिया को मारती है। और हम जो मीडिया वाले हैं, हम लोगों के पास कोई अलग से कोई कानून का अधिकार नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डंडा नहीं होता, कोई रिवॉल्वर नहीं होती, और ना कोई ऐसा अधिकार होता है हमारे पास। हम एक कॉमन मैन होते हैं, बस हम जर्नलिस्ट होते हैं। एक जुनून होता है उस खबर की तह तक जाना, उस घटना स्थल पर पहुंचना जहां से सब लोग भाग रहे हैं, हम वहां पहुंचते हैं। जैसे इसमें भी कई कहानियां हैं, जैसे कोविड की इसमें किस्से हैं। कोविड के किस्से में जब लोग अस्पतालों से दूर भाग रहे थे, हम लोग अस्पतालों में जा के रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर भले ही वो हमने मास्क पहना हुआ हो, और हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं, ये सारे लोग बहुत मेहनत करते थे। और वो मेहनत इसलिए नहीं करते थे कि हमको मेहनत करने का कोई बहुत जुनून, माने अपने प्रोफेशन से लगाव है, एक जुनून है, अपना काम करना है, कैसे करना है, अच्छे से अच्छा करना है। तो उस तमाम में उस अपने प्रोफेशन को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के क्रम में ये करते हैं। और ये फिर किस्से फिर जब लिखने शुरू किए तो लोगों को बहुत पसंद आए। तो इस जो मेरी किताब है ऑफ द कैमरा, इसके पहले एक ऑफ द स्क्रीन आ चुकी है, और उस ऑफ द स्क्रीन में भी ऐसी कहानियाँ थी, मगर इस बार इसमें कोविड की कहानियाँ हैं। कोविड का दुख है, कोविड का दर्द है, पलायन है। और एक पिछले दिनों हमारे मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव हुआ। एक सरकार को लोगों ने 5 साल के लिए चुना, मगर वो सरकार अपनी नाकामी के चलते 5 साल तो नहीं 15 महीने में चली गई, जबकि वो आई थी 15 साल बाद। तो उस दरमियान जो उलट फेर जो हुआ, कुछ उसके किस्से हैं, कुछ जिंदा कहानियाँ हैं। जो कहानियाँ तो हमारी सारी जिंदा ही हैं, क्योंकि हम लोग टीवी के पत्रकार होते हैं, तो सारी कहानियाँ सच्ची कहानियाँ हैं, जिंदा कहानियाँ हैं। और आप उन कहानियों को पढ़ के महसूस करोगे, या कई दफ़ा लोग कहते हैं कि इन कहानियों को पढ़ के लगता है कि हम घटना स्थल पर ही पहुँच गए हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत दूर से फ़ोन किया जिसको, और कहा कि आप वो जो शब्दों की वीडियोग्राफी करते हैं वो बड़ी पसंद आती है। तो ये शब्दों की वीडियोग्राफी है जो आप पढ़ोगे तो महसूस करोगे, और आपको लगेगा कि उस स्पॉट पे आप भी मौजूद हो। बिल्कुल राजेश, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है
और एक ऑब्जर्वेशन आपके लिए ये भी था कि आप मिठाइयाँ बनाते हैं बड़ी कुशलता से। एक ऐसे हलवाई हैं कि जो मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं, खबर की मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, कैडबरी, आप सबके मुंह में पानी होगा अभी नहीं मिली। और उसके बाद जो कुछ इनके पास अनुभव रूपी बचता है मावा, उससे ये और मनोहारी मिठाइयाँ बनाते हैं और उसको भी सेल आउट करते हैं। प्रभाष जोशी जी जो हमारे आपके अपने मध्य प्रदेश से ही हैं, कागज कारे उनका एक लोकप्रिय स्तंभ हुआ करता था उनके दिनों में 90 में। उसमें एक बार उन्होंने लिखा था कि किसी एक दिन मैं भूल जाता हूं सप्ताह में कि मैं जर्नलिस्ट हूं। मुझे लगता है सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट, एक फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आता है, क्या वो एक दिन भूलना नहीं चाहिए उसे कि वो किस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है? वो दिन उसका हो, वो दिन सिर्फ उसका हो। ब्रजेश शायद ये साध पाते हैं, इसीलिए लिख पाते हैं। ब्रजेश, कई बार मैं देखता हूं कि आप जब लिखते हैं तो बहुत कुछ ऐसा भी आपके लिखने में हमें दिखता है जो प्रोफेशनल प्रतिबद्धता के चलते, कमिटमेंट्स के चलते हम कह सकते हैं बहुत भावुक हो रहा है यहाँ व्यक्ति, ये इस तरह से कैसे देख सकता है। लेकिन आपके लेखन में वो चीज़ें, जैसे मैं कोविड के बारे में देख रहा था तो आपने, हमारे ही एक साथी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे जुगल किशोर शर्मा, उनकी पीड़ा को जिस तरह से आपने नरेट किया कि किस तरह से वो कोविड की पहली लहर में जब उनको कोविड हुआ तो वो दीवानों की तरह पागल होकर बार बार पूछ रहे थे लोगों से कि इसमें लंग्स में इन्फेक्शन आ जाए तो क्या होता है। और आप जानते हैं कि कोविड की पहली लहर में किसी के पास इसका माकूल जवाब नहीं था। हर व्यक्ति यही कहता था ऑक्सीजन लो, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। और उसको जिस तरह से आपने लिखा है उसने मेरे मन को छुआ। तो इस तरह के किस्से लिखना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक नामचीन जर्नलिस्ट कहते हैं कि दुनिया में 3 काम बहुत कठिन हैं: धरती से अन्न को उपजाना, अपनी बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना जो लेखक करता है, और उससे भी कठिन काम है कि दूसरों की बात को एक्सप्रेस करना, जो कई बार सोशल रिफॉर्मिस्ट और राइटर्स करते हैं। जी शरद जी, हम लोग की खुशनसीबी होती है कि हम जर्नलिस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा संपर्क, मैंने कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, एक बार मैं उनको अपने चैनल के प्रोग्राम के लिए दिल्ली लेके गया तो रास्ते में उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक कला होती है, उसको बोलते हैं भाव प्रवेश की कला, यानी कि आप किसी कैरेक्टर में उतर जाते हैं, महसूस करने लगते हैं वैसे। तो चूंकि मैं लगातार लिखता था, हर हफ्ते लिखता था, हर हफ्ते लिखना एक बड़ी चुनौती होती है। और दूसरा फिर ये कि कैसे कुछ नया लिखा जाए। लिख तो सभी रहे, कोविड में मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे वो हो गया, मगर इसको कैसे कुछ नया लिखा जाए। तो उस नए लिखने के क्रम में मैं जुगल से, मुझे जब पता लगा कि मेरा हम लोग का साथी रिपोर्टर पहला जर्नलिस्ट था भोपाल का जो किसी पुलिस बीट कवर करने गया और उसको कोविड हो गया। फिर उसने जो कुछ, मैंने उसे फ़ोन किया अस्पताल में, उसने जो मुझे अपना किस्सा बताया तो मैंने जुगल बन के लिखा पूरा कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। और वो किस्सा इतना जोरदार था तो लोगों ने उसका वो किस्सा आधा पढ़ के मुझे फ़ोन किया कि तुमको कोविड कब हो गया, मुझे बताया भी नहीं। तो लोग इतने डूब गए थे। तो इस टाइप के मैंने इसमें किस्से लिखे हैं। जैसे वो जुगल का किस्सा है कि मैंने यमराज को देखा। उसने मुझे बताया कि जब मैं रात में सोता था वहाँ अस्पताल में सुनसान में, तो मुझे लगता था यमराज आ रहे हैं तो आज ले जाएंगे, और जब उनसे फिर लगता था आज नहीं ले जाए तो कल ले जाएंगे मुझे वो। तो रोज़ वो इस अंतरदशा से गुजरता था। तो मैंने जुगल बन के लिखा कि यदि मैं जुगल होता तो क्या होता। उसका पूरा किस्सा मैंने लगातार लिखा। ऐसे इसमें एक किस्सा है कि मैं चाइनीज शिक्षिका, हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ भोपाल में राजधानी में प्रदर्शन करने लोग, बहुत लोग आते हैं पुलिस के डंडे खा के जाते हैं, क्योंकि प्रदर्शन करना अब तकरीबन गैर कानूनी सा होता जा रहा है। हम लोग ने बहुत बदलाव देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं। पहले प्रदर्शन करने लोग आते थे, मगर कुछ लोग अपनी वो चयनित हो गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले हैं, नियुक्तियाँ नहीं मिली हैं, सिलेक्ट हो गए हैं, मगर कितनी बड़ी उलझन है। और ये उलझन पिछले 2-3 साल से वो लोग गुजर रहे हैं। तो मैंने एक शिक्षिका को लिखा, मैंने एक पूरे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि बहुत लोग आए, मामा को राखी बांधने आए और उनकी राखी की जो दुर्गति हुई,
तो मैंने वो महिला बन के लिखा कि मैं सुबह 4 बजे उठी, राजगढ़ के किसी गांव से, वहाँ से अपने साथियों के साथ जीप से आई, फिर यहाँ भोपाल आई, बीजेपी की दफ्तर के सामने बैठ गए। मुझे उम्मीद थी कि मैं जो रक्षाबंधन है, जो राखी लेके आए हूँ, तो मामा जी आएंगे, हम उनको राखी बांधेंगे, हमको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। मगर मामा जी तो नहीं आते हैं। सडनली पुलिस आती है, पुलिस कहती है जाओ, आपका गैर कानूनी है और वरना हम आपको केस कर देंगे। फिर पुलिस आती है, चारों तरफ से घेर लेती है, उन महिलाओं के जो मास्क लगाए रहते हैं मास्क उतार के फ़ोटो खींचती है, और फिर आखिर में होता क्या है कि बहुत धक्का मुक्की मारा मारी, उनको बहुत दूर तक भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। तो आप कल्पना करिए वो महिला जो एक उम्मीद के साथ आई है कि मैं अपने प्रदेश के प्रमुख जो है मामा है उनको राखी बांधूंगी, उसके लिए वो राखी लेके आई है, थाली की थाल सजा के लाई है, मगर उस थाली के राखी के थाल पे पुलिस जूते रख रही है। तो क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। उसका पति दो बार उसको फ़ोन कर रहा है कि खाना खाया, मगर खाना क्या, यहाँ तो थाने और जेल जाने के लाले पड़े हैं। तो ये कहानी जब मैंने लिखी तो वो महिलाएं खूब रोईं और मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी। तो कुल मिला के एक नए तरीके से कैसे लिखा जाए, कैसे अपने आप को नएपन में ढाला जाए, तो इसमें से बहुत सारी कहानियाँ हैं। और कुछ कहानियाँ तो ऐसे हैं जो मुझे चलते चलते मिल जाती हैं। जैसे यहाँ संजीव गुप्ता जी हैं, तो संजीव गुप्ता जी से मैं एक फ़ोटो के सिलसिले में भास्कर में एक फ़ोटो छपी हुई थी जलती हुई चिताओं की कोविड में। तो मैं इनसे इंटरव्यू करने गया तो इन्होंने कहा कि सर, जो लोग तो पागल हो गए थे उस समय, एक लड़की मिली थी, उससे मुझे धुएं की फ़ोटो खिंचवाई कि देखिए वो जो धुआं निकल रहा, मेरी माँ जा रही है, उसकी फ़ोटो खींचो। तो संजीव भाई ने उसकी फ़ोटो खींची। मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन था, यदि आप यहाँ चला सकें तो उसमें वो फ़ोटो है। तो उस फोटो में मैंने संजीव से पूछा क्या मुझे उस महिला का नंबर मिलेगा। तो दरअसल कहानी ये थी कि वो जो उस समय शमशान में इतनी ज़्यादा लाशें थीं कि सब लोगों को जला नहीं पा रहे थे। तो आधे से ज़्यादा लोग जो इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल होता है उसमें लोग जा रहे थे। तो वहाँ तो कुछ देख ही नहीं पाते, बस जलता हुआ धुआं निकलता है। तो एक महिला अपने पति के साथ खड़े होकर वो जो धुआं निकल रहा था उसमें अपनी माँ की आकृति देख रही थी। वो उन दोनों का नाम दीपक और दिव्या थे। वो अपने पिता को खो चुकी थी, अपनी माँ को खो चुकी थी, और माँ का जो धुआं निकल रहा था उस चिमनी से, वो संजीव गुप्ता से कह रही थी कि वो मेरी फ़ोटो खींचो, मेरी माँ जा रही है। उसको उस धुएं में अपनी माँ दिख रही थी। तो आप कल्पना करिए, ये देखिए, ये वो जलती हुई चिताएं हैं। और इसके बाद एक फ़ोटो और है, सर इसके पहले होगी, इसके पहले आप लाइए, और पहले लाइए। ये देखिए, ये जो ऊपर जा रहा है जो धुआं है, उस धुएं में आपके लिए वो धुआं है, मगर वो जिसकी माँ गई है वो उसको उसमें माँ की छवि देख रही है कि देखो मेरी माँ जा रही है, जल्दी भैया फ़ोटो खींचो। और हमारे संजीव दीवार पे खड़े हुए थे, इनके पैर छू के कहती भैया फ़ोटो खींचो। तो संजीव ने फ़ोटो खींची, और वो जो शख्स थे, जो बेटी थी, वो अपने पति के साथ सीने से लिपटी हुई है। ये दीपक है, ये दिव्या है, और ये कहाँ रहते हैं, कोतमा में रहते हैं। और मैंने इनको कोतमा में ढूंढा, फ़ोन पे बात की और इनकी कहानी लिखी। और इनकी कहानी लिखने के बाद मेरे पास बहुत फ़ोन आए। तो कुल मिला के आप अपने आप को कैसे नएपन में इवॉल्व करते जाते हो। और यहाँ पे मेरे साथ गौरव आए हुए हैं, गौरव शर्मा। गौरव हैं क्या? हाँ जी, अच्छा, गौरव हैं और सौरभ हैं। गौरव सौरभ गजब ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और दोनों बिल्कुल। गौरव आप चाहें तो यहाँ सब आपको अच्छे से देख पाएंगे, ये ट्विंस हैं। और अच्छा जी, एंड आइडेंटिकल इतने हैं कि आप पहचान नहीं सकते। एक क्विज होनी चाहिए इनके लिए भी। गौरव शर्मा, सौरभ सोना दोनों आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और दोनों एकदम हूबहू ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे दिखते हैं, कपड़े, जूते, चश्मे हूबहू। अच्छा, इनकी जो पत्नी है वो भी ट्विंस हैं। तो ये सब मुझे अचानक मिल गए कि किसी पहले एक मिला, फिर दूसरा मिला, फिर इनके घर जाके मैंने इनकी कहानी की। तो मेरी ये सब जिंदा कहानियां हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात है, आपके लिए बहुत बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम। थैंक यू आपकी विनम्रता कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए, और ब्रजेश के कई जीवंत किरदार हमारे बीच में मौजूद है। एक शख्स और, एक मेवाड़ा जी हैं हमारे। मेवाड़ा जी कहीं हैं क्या? लोग कहते हैं कि गांव, हाँ वो हमारे मेवाड़ा जी हैं। लोग कहते हैं कि टेलीविजन वाले गांव की कहानियां नहीं करते, खेती की कहानियां नहीं करते, मगर हमने गांव और खेती की इतनी कहानियां की हैं कि हमारे जो मेवाड़ा जी हैं, इन पे भी 1-2 किस्से हैं इसमें। और हमारे मेवाड़ा जी अब खुद पत्रकार हो गए हैं। वो गाँव की समस्या हमको टीवी पे रिकॉर्ड करके अपनी बाइट लेके हम लोगों को भेज देते हैं। अब गाँव भी नहीं जाना पड़ता है। मगर आप देखिए बदलाव कैसे आता है। तो हमारे मेवाड़ा जी बदलाव के भी प्रतीक हैं। और ये भी है कि हम टेलीविज़न वाले, मेवाड़ा जी राघव साहब को खड़े होकर बताइए ज़रा। सर, ये मेवाड़ा साहब हैं, भोपाल के पास चंदेरी में रहते हैं।
और बहुत सक्रिय किसान हैं। और अब तो ये बदलाव है, बिल्कुल और ये जिंदा कहानी है हमारी। जी आप नेपाल में करेंगे जी बिल्कुल। और कभी मौका रहा तो आपका वो गीत हम आपकी सुमधुर आवाज में जरूर सुनना चाहेंगे। हमने प्राचीन भारत में ये जरूर सुना है कि परकाया प्रवेश, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से जब गृहस्थ जीवन से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया तो ये दावा सामने आता है कि उन्होंने वाराणसी के नरेश जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके शरीर में प्रवेश करके उस अनुभव को प्राप्त किया और फिर उसको शास्त्रार्थ में उसका उपयोग किया। तो एक पत्रकार या एक लेखक कई बार दूसरे की स्किन में, उसके जीवन में प्रवेश करता है, नहीं तो आप नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं जान सकते हैं। और ब्रजेश के कई किस्से जो हमें मिलते हैं, मैं खुद दहल गया। आप कल्पना कीजिए कि कोविड के इस भयानक सन्नाटे में 2 युवा भाई बहन चीख रहे हैं कि वो धुआं मेरी माँ का अक्स है। आप उसको कैद कीजिए और कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां इतनी अधिक तादाद में पार्थिव शरीर आ रहे हैं कि सबके लिए वो एक सेरेमनी है, सिर्फ एक रस्म है, जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जो शरीर आ रहे हैं उनमें एक वायरस है जो दुनिया को हिला देता है। लेकिन उसके बीच में एक जर्नलिस्ट बड़ी शिद्दत से, बड़ी मानवता से, बड़ी ह्यूमैनिटी से उसको पकड़ता है। ब्रजेश, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। जो मैं इन बच्चों से कह रहा था कि मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के इस दौर में करेली का वो श्याम टाकीज, ये बड़ा मुझे बहुत इसलिए रुचिकर लगा कि मेरी जनरेशन वो जनरेशन है जो फणीश्वर नाथ रेणु को, जो हिंदी पढ़ते हैं आप में से, मुझे लगता है अधिकांश लोग पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए, प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आचार्य चतुर्सेन को पढ़ते हैं, ग्राम्य जीवन की कहानियों की तरफ जाते हैं, छोटे कस्बों को समझते हैं, उनके लिए ये श्याम टाकीज बड़ा अपीलिंग है। दरअसल मैं और यहाँ मनोज शर्मा होंगे मेरे बचपन के दोस्त। हमारे मनोज शर्मा अगर साथ रहते थे और हमारे घर के बगल में एक सिंगल फ्लैक्स टॉकीज़ थी, तो वो सिनेमा के बहुत सारे किस्से, एक किस्सा लिखा कि कैसे हम उस ज़माने में सिनेमा चलता था। और फिर उस सिनेमा के मैं चूँकि मैं सबसे खुशनसीब आदमी उसको मानता था जो ऑपरेटर होता था और जो सबसे ज़्यादा फिल्में पूरे वक्त देखता रहता था। तो कल्पना करता था कि लोग मुझसे पूछते थे क्या बनोगे, तो मैं कहता था मैं ऑपरेटर बनूंगा। तो शायद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कैसे आप नए नए तरीके से लिखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ भोपाल में आपको याद होगा हमीदिया अस्पताल में के बच्चों के ICU वार्ड में आग लग गई थी। तो कहने को तो उसमें तकरीबन 6 बच्चों की मौत हुई थी और हम सारे टेलीविज़न के लोग वहाँ से रात से लेके सुबह तक वहाँ मौजूद थे और लगातार अपना टेलीविज़न कवरेज करते रह गए। मगर जब लिखने की बारी आई तो मैंने कहा क्या इसको किस तरीके से लिखूं। तो फिर मैं एक डॉक्टर बन गया। मैंने एक डॉक्टर से बात की कि उस डॉक्टर ने वहाँ क्या क्या किया। तो मैंने उस डॉक्टर बन के पूरी कहानी लिखी कि मैं उस जगह पर मौजूद था, अचानक देखा कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो फिर मैं उस धुएं में घुसा। और चूँकि मैं वहाँ जाता रहता था तो मुझे मालूम है कि कहाँ पे पलंग रखे हैं, कहाँ पे क्या रखे, क्योंकि धुआं उठता है तो अंधेरा छा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो पूरा किस्सा मैंने एक डॉक्टर के नज़रिए से लिखा, डॉक्टर बन के ही लिखा। मैं पूरा डॉक्टर बन गया और डॉक्टर जैसा ही लिखा। तो उस किस्से को भी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया कि किस नए तरीके से लिखा गया। तो आप यदि लगातार लिख रहे हैं, और टेलीविज़न जर्नलिस्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि आप मौके पे सबसे पहले मौजूद होते हो और मौके पे सबसे देर तक रहते हो, तो वो आपका प्रिविलेज है। और हर कोई वहाँ नहीं मौजूद रह पाता, आम आदमी नहीं रह पाता, मगर हम रह पाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि या तो हम TV लाइव करके या अपनी स्टोरी में उस चीज़ को दें, मगर उसके बाद भी बहुत कुछ बच रह जाता है। जैसे आपने कहा कि मुझे किसी ने लिखा था कि ब्रजेश राजपूत बहुत अच्छे हलवाई हैं, ताज़ी ताज़ी मिठाई तो TV में बेच देते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको मिक्स करके एक मिक्स मनोरम मिठाई बना देते हैं। और एक हमारे मित्र ने अभी एक दिन पहले और फेसबुक पे लिखा था कि कहानी के पीछे के किस्सों को कागज़ के दोने में कलम की चम्मच से चटकारे लेकर चखते हैं और लिखते हैं और ऐसा लगता है कि एकदम चाट का मज़ा देता है। तो बात वही है कि किस्से तो कहानी सबके पास है, बस आप उन कहानी किस्सों को लिखिए और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे नए नए स्टाइल
अपना बनाते जाएंगे। तो एक लेखक के सामने यहाँ बहुत सारे लेखक हैं और तो एक चुनौती होती है बिल्कुल। कि अगली किताब में, अगले लेख में आप कैसे अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्रेस करें कि लोगों को दोहराव और बनावट ना लगे। तो मेरी जो पिछली किताब थी उससे ये किताब डिफरेंट होगी, क्योंकि जिन्होंने ऑफ द स्क्रीन पढ़ी है वो ऑफ द कैमरा पढ़ पाएंगे, और जब ऑफ द माइक आएगा तो आप उसमें कुछ अलग किस्से होंगे। बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। वक्त की मर्यादा है, तो मैं इस सवाल के बाद कुछ प्रेजेंटेशन पार्ट जो आपका है ब्रजेश, आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें, और उसी के साथ मैं कुछ सवालों को भी ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले ये जो फर्स्ट पर्सन में ब्रजेश ने लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने मृत्युंजय पढ़ा होगा आप में से, शिवाजी सामंत को, और उपन्यास लेखन में ये परंपरा है कि फर्स्ट पर्सन में जब आप कर्ण को या युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, आप उनकी पीड़ा को भी समझते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा पत्रकारिता में प्रयोग है ये, कि आपने लोगों की पीड़ा को फर्स्ट पर्सन में लिखने की कोशिश की, और ये बहुत आसान नहीं है। और इनकी किताबों की एक विशेषता ये भी है, जो 5 किताबें हैं, आप में से जो लिखना चाहते हैं, ख़ासतौर से ये बहुत प्यारे यंगस्टर्स हमारे बैठे हुए हैं, मेरी निगाहें युवाओं से कभी नहीं हटती हैं, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा उम्मीद से हमें आप ही की तरफ देखना है। तो आप भी कभी ब्रजेश जी की किताब आपके हाथ लगे तो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत सरलता से लिखा गया है और बिना कुछ कहे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैसेजिंग है कि आप कैसे बहुत प्लेन तरीके से जो कुछ घटा है लेकिन उसमें डूब कर उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ब्रजेश, आप अगर कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन पर कुछ कहना चाहें, या हम सीधे जनता लोगों के सवालों की तरफ मैं चलना चाहूंगा संक्षेप में। जी अनुराग जी, आपकी तरफ माइक्रोफोन। जी, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है। जब भी कोई प्रोफेसर क्लास लेता है तो उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे की तैयारी करता है, और हम जर्नलिस्ट से उम्मीद की जाती है, खास करके टेलीविज़न जर्नलिस्ट के, कि भाई आपको राष्ट्र के नाम संदेश देना है, किसी बात को कहना, और आपके लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। और ब्यूरो में तो ये बड़ी मुश्किल है कि आपको राजनीति से लेकर के कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में आपको बात करनी है, और फिर आपके बारे में राय गढ़ी जाती है कि तैयार नहीं था, या इसको पता नहीं है, या कुछ भी इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन एक लेखक से जो कि टेलीविज़न का पत्रकार है, वो भी पिछले 3 दशकों से लगभग, और इतनी किताबें लिख रहा है, तो इसके लिए किस तरह की तैयारी चाहिए, खास करके आप हम लोगों को भी थोड़ा बता पाएँ, और जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए। अनुराग, तुम्हारे पास तो खूब अच्छा लंबा अनुभव है, और तुमने बहुत अपने आप को इवॉल्व किया है, कहाँ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और अब इतनी बढ़िया कहानियाँ कर रहे हो। तो दरअसल कहानियाँ तो हम लोग रोज़ करते हैं, उन कहानियों को जो बेहतर कहानियाँ हैं उनको हम लोग दिमाग में, दिल में सहेज के रखें, और फिर उसको, चूँकि हम पत्रकार लोग हैं और हम पढ़े लिखे पत्रकार हैं, हम लोग जर्नलिज्म स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं सागर में पढ़ा हूँ, तुम जामिया मिलिया में पढ़े हो, तो ये हम लोग ऑब्जेक्टिविटी का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रख के तथ्यों के साथ बहुत सरल भाषा में, देखिए पत्रकार और साहित्यकार की किताब में शायद आप समझ पाएंगे कितना फ़र्क होता है। साहित्यकार की किताब पढ़ के आप थोड़ी देर में हो सकता पसंद आए या एकदम खारिज कर दें, मगर जो पत्रकार की किताब है उसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रकार की किताब में आपको तथ्य मिलेंगे, आपको भाषा सरल मिलेगी, रोचक मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, और न्यूज़ पैक मिलेगा। उस आदिम ज़माने की बात नहीं की गई होगी कि हम बहुत पहले की बात करेंगे, हम आज की बात करेंगे। और तो उन अच्छी कहानियों को हम लोग सहेज के रखें, और फिर उन पर एक बेहतर तरीके से अब लिखना शुरू करना। हम जब अपनी स्मृतियों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम डायरियाँ लिखते हो क्या? मैंने कहा नहीं, डायरियाँ तो नहीं लिखता हूँ, मगर हाँ मुझे मालूम है कि मैंने कोई कहानी कब की है। जैसे यहाँ मेरे गुनाह के साथी आए हैं मोहन, तो मैं यदि इनके साथ मैंने कुछ अच्छी कहानियाँ की हैं तो मैं इनको फ़ोन लगाता हूँ कि यार मोहन, अपन ने वो कहानी कब की थी, तो वो रेफरेंस इनके पास होता है कि सर आप तब आए थे, अपन ने तब कहानी की थी, तब ऐसा। तो फिर वो कहानी पूरी एक बार फिर जिंदा हो जाती है, और जिंदा हो जाती है तो फिर आप और हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं तो छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। तो उस डिटेलिंग को बड़ी संवेदनशीलता के साथ जब हम लोग लिखते हैं, और तो वो चीज़ एकदम टच करती है लोगों को, और वही चीज़ उस कहानी की मेरे ख्याल कीमत होती है, और वही उस कहानी की इज्जत होती है कि जब वो दिल को छू जाए। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, आपने उस जाके संवेदना को महसूस किया हो, क्योंकि जर्नलिस्ट आप ज़मीन पर बैठ के लोगों की बाइट लेते हो, है ना, तो आप उस आदमी से जुड़ जाते हो। तो वो जो संवेदनशीलता है, आपकी जो संवेदना है, वो यदि आपकी कहानी में आती है और धीरे धीरे आने लगती है,
फिर कई दफ़ा आपको लगता है कि इस कहानी में और इमोशन डाला जाए, क्योंकि कहानी बहुत दुखद थी। जैसे इसमें एक कहानी है, पेटलावर हादसा हुआ था। पेटलावर हादसा में एक धमाका हुआ और उस छोटे से कस्बे के 75 लोग मर गए। 75 लोग, एक कस्बे के 75 लाशें एक साथ जली, वो हमने देखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उन 75 घरों में पिछले 3 दिन में गए, एक एक घर में अपने काफिले के साथ। मगर वो संवेदनशीलता, चूंकि आप वहाँ हो, आपने देखा है, एक एक घर में दुख दर्द तकलीफ महसूस की है, तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाओगे। मगर सबसे पहली बात है कि आपको संवेदना को दिल से महसूस करना पड़ेगी, क्योंकि शब्द तो आपको आते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप बेहतर तरीके से लिख पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ब्रजेश को मैंने हमेशा देखा है कि इनकी एक नोटपैड होता है। मैं फिर आप यंगस्टर्स की तरफ आऊँगा। आज का ये जो अनुभव है, इसमें से जितने भी आप अगर इसको डायरी में लिख लेंगे, कॉपी में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ये आपके 20 साल बाद आपके लिए ये बहुत बड़ी पूंजी होगी। ब्रजेश टीवी के पत्रकार होकर जो जनरली नोट्स नहीं लेते, वो मानते हैं कि उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है और वो हाथ हिलाते हुए खड़े रहते हैं, क्योंकि मेरा लंबा समय प्रिंट में गुजरा है और मैं अपनी डायरियां भर भर के चलता था। लेकिन ब्रजेश को मैं आज भी देखता हूं कि ये उन दुर्लभ टीवी के पत्रकारों में से हैं जिनकी डायरी, क्योंकि ये रेफरेंसेस आपको लिखने पड़ते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट स्केचेस बनाता है, उसी तरह एक पत्रकार के पास डायरी और पेन होना बहुत ज़रूरी है जी। और ये किताब का जो अनुभव है, क्योंकि फिर यंग जनरेशन है और अब ऐसे ऐप भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि 300 पेज की किताब को हम आपको 7-8 मिनट में छोटे छोटे चैप्टर बना के सुना देते हैं। आप इसको सुन लीजिए ईयरफोन लगाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, और दुनिया की श्रेष्ठ किताब को आप 7-8 मिनट में समझ लेंगे। लेकिन ये वैसा ही है कि माँ की गोद को महसूस नहीं किया है आपने, उसको डिजिटली फील किया है। तो डिजिटल फील मत कीजिए। किताब की ये जो सुगंध जो बचपन से मुझे बहुत प्रिय रही है, आप भी जब अपनी नई टेक्स्ट बुक लाते होंगे, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है कंप्यूटर। मैं कोई बायस नहीं हूँ, डिजिटल बायस नहीं है मेरा, बहुत अच्छा मीडियम है, उसका जितना अच्छा उपयोग हो सके। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैं जिन दिनों रीडर्स पढ़ता था 1990 में, तो एक डायरी में मेरे कोटेशन दर्ज था कि किसी भी टेलीफोन कॉल को आप ग्रीन रिबन में लपेट कर रख नहीं सकते हैं। ये आपके ईमेल के लिए भी उतना ही बड़ा सच है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी उतना ही बड़ा सच है कि किसी भी प्रेयसी से या किसी प्रेमी से आया हुआ संदेश आप जिंदगी भर व्हाट्सएप में संभाल के रखेंगे तो आप नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं बेहिचक। ब्रजेश से अगला सवाल आप में से कोई जो भी करना चाहें जी। सर, मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पत्रकारिता पढ़ाई कर रहा हूं। मेरा आपसे ये सवाल है कि सर, आजकल टीवी रिपोर्टिंग के बारे में कहा जा रहा है कि टीवी रिपोर्टर्स कम हो रहे हैं, रिपोर्टिंग कम हो रही है, एंकर्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई तो है, बिल्कुल सच्चाई है कि अब हर जगह स्पॉट पे रिपोर्टिंग करने के लिए एंकर्स को ही भेजा जाता है। हम रिपोर्टर्स को कमतर माना जाता है, उनको लगता है। और दिक्कत आप लोगों के साथ भी है, आप लोगों ने एंकर्स को पत्रकार मानने लगे हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर प्रणय राव का किसी ने इंटरव्यू किया था, तो उनके इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा, नहीं सर मेरे मित्र हैं, तो हाँ, तो डॉक्टर प्रणय राव का जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उनसे कहा गया कि आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने टीवी जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट और चुनाव विशेषज्ञ और एंकर और वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, देखिए आपने सारे मेरे बारे में जितने भी उद्बोधन या जो भी विशेषण लगाए मुझे पसंद आए, सिर्फ एक को छोड़ के, वो था एंकर। एंकर वो काम है जो मैं नहीं करना चाहता, और इन सारे विशेषण में सबसे कमतर, यदि सबसे घटिया तो नहीं कहूँगा, मगर सबसे छोटा यदि कोई काम है तो वो एंकर होना है। क्योंकि एंकर को वही है जो लिखा हुआ जाता है उसको वो पढ़ना पड़ता है, मगर रिपोर्टर वो मेहनती आदमी होता है जो ग्राउंड में जाता है, धूप सर्दी पसीना बारिश, पुलिस के डंडे, हमारे साथ मनोज सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जिन्होंने मंदसौर में बहुत डंडे चलवाए थे सॉरी सर, तो ये सब झेलने पड़ते हैं हम लोगों को, तो वो रिपोर्टर होता है। तो जो टीवी की जो पत्रकारिता है उसमें मुख्य कड़ी जो है वो रिपोर्टर है। यदि टेलीविजन रिपोर्टिंग कम हो जाएगी तो एंकर ड्रिवन चैनल हो जाएगा, तो एंकर ड्रिवन चैनल और फिल्म के चैनल में या फिल्मी चैनल में कोई बहुत ज़्यादा फर्क बचेगा नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और अभी किसी ने अच्छा डंडे रखवाए थे, सॉरी। तो जैसे किसी ने कहा कि पुलिसर ने कहा कि रिपोर्टर इज अ होप
and editor is disappointed. ये सही बात है कि मैं इससे बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं करूँगा कि ब्रांडेड कपड़े और एसी में बैठकर, और ये दौर थोड़ा ऐसा भी है कि एंकर के नायक हो जाने का दौर है। अब एंकर एक अभिमान से ये भी कहता है कि ये करिए, ये मत करिए। अब वो कहता है कि आप ये देखिए, ये मत देखिए। मैं जो बात कह रहा हूं वही सच है, हम ब्रह्मास्मि। ये उसका अहंकार है जिसका खंडन मंडन आप दर्शक के नाते आपको करना चाहिए, बेहिचक करना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहूंगा। ये तो रिपोर्टर से ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और रिपोर्टर ही अच्छे एंकर हैं। आज भी टेलीविजन में देखिए, ये खाकसार जो आपसे मुखातिब है, इसने भी खूब धूल खाई है। एक बार तो मेरा पास सुरक्षा बल के एक नौजवान ने, हरियाणवी थे, मैंने उनसे कहा मेरे पास पास है, थोड़ा सा रिपोर्टर की अधीरता थी, मैं लेट हो गया था, तो उसने कहा ला मेरे को दे, तेरा पास किधर है। मैंने पास निकाल के दिया, उसने फाड़ दिया और कहा कि अब की करेगा, जाएगा अंदर। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब अब तो कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे जाने देंगे आपकी कृपा पे। ऐसे बोल, जा अंदर जा, बैठ मजे कर, पहले तू बड़ा कड़रा से। तो हम उस परंपरा से निकले हैं सर। हमने बहुत धक्के खाए हैं, तपती धूप में माइग्रेन भी हुआ है जब 42 में खड़े हैं। तो एंकर बनने के लिए पत्रकार होना, रिपोर्टर होना जरूरी है, और जो सीधे एंकर बना है सर, उसका भविष्य मुझे गड़बड़ लगता है। ब्रजेश जी, अगला सवाल, और एक सवाल ले, हाँ जी, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। माइक वहां पे दे दिया जाए प्लीज, पीछे टू द यंगल देयर। ये हम आखिरी सवाल ले रहे हैं या एक और ले सकते हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके दयानतदारी के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम दीप्ति वैष्णव है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि एक पत्रकार तो लोगों की कहानियाँ लिखता है, सुनाता है, लेकिन पत्रकार की अपनी कहानी क्या है, वो मैं आपसे सुनना चाहूँगी। बड़ा कठिन सवाल किया आपने। अपनी कहानी कहना सबसे मुश्किल काम होता है जी। पर बड़ी बात वही है कि आपकी कहानी कौन सुनेगा कौन। क्योंकि लोगों की कहानियां सुनना, आप जब दूसरों की कहानियां सुनते हो तो लगता है कि आपकी कहानी तो बहुत छोटी है, क्योंकि दुनिया में इतने दुख दर्द हैं। आप रिपोर्टर हो, रोज़ खबरों में जाते हो, रोज़ धरने, प्रदर्शन, आगजनी, दुर्घटनाएं, कोविड की मारामारी, वो सब देखते हो तो लगता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो पर ठीक है, अपनी कहानी भी होती है, और अपनी कहानी वक्त आने पे कही जाएगी। तो अपनी कहानी सहेज के रखिए, और जब वक्त मिले और कोई सुनने को तैयार तो जरूर सुनाइए। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। और ये मैं आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को समापन की तरफ ले जाएंगे। जी सर नमस्ते। जी जी जी। मेरा नाम संजीव है, और हमारे सारे बच्चे गार्गी गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। तो उनके बिहाफ में एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, पत्रकारिता को भी स्कूलों में जी। तो ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अभी डेवलप हो रही है, तो अक्सर ये चीज़ें, सवाल जो सामने आते हैं कि क्या कहानी पहले से बन जाती है फिर लिखी जाती है, कि लिखते लिखते कहानी बनती है। ये एक सवाल जानना था सर। अच्छा, आपने चूँकि बच्चों की बात की, तो मैं कहूँगा कि कहानी लिखना आसान नहीं है। पहले कहानी लिखने से पहले खूब कहानी पढ़िए, खूब पढ़िए, और यदि आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पढ़ने से आपका भाव आते हैं, शब्द आते हैं, विचार आते हैं, और फिर आप कहानी पढ़ते पढ़ते उस देखने लगते हो कि कौन आदमी कैसे कहानी लिखता है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, तो हम धीरे धीरे देखते देखते समझ जाते हैं कि सचिन किस स्टाइल में बैटिंग करता है, सहवाग किस स्टाइल में बैटिंग करता है, धोनी किस स्टाइल में बैटिंग करता है। तो धीरे धीरे हम सब समझने लगते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ते पढ़ते समझने लगते हैं कि शब्द क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, कहानी कैसे होती है, कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मगर उसमें पहली और आखिरी शर्त है, खूब पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, अखबार पढ़िए, अखबार से प्यार करिए, पत्रिकाएं कम होती आ रही हैं, व्हाट्सअप कम पढ़िए। जो व्हाट्सअप पे आ रहा है ना, वो सबसे बुरी चीज़ है। बहुत लोडेड होता है, बहुत किसी खास विचारधारा से प्रेरित होता है, उसे खास झोंक लगा होता है। तो व्हाट्सअप कम पढ़िए, अखबार ज़्यादा पढ़िए, मैगजीन ज़्यादा पढ़िए, टीवी वही देखिए जो आप देखना चाहते हैं। पूरे वक्त टीवी मत देखिए, वैसे अब टीवी में देखने को बहुत कुछ बचा नहीं है। तो पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे।
तो प्लीज़ पढ़िए, खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, बच्चों की बहुत अच्छा अच्छा साहित्य है, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, बहुत अच्छा अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, रचा जा रहा है। भोपाल से बहुत अच्छी अच्छी किताबें, पत्रिकाएं निकलती हैं बच्चों की, एक पिटारा निकलती है, साइकिल निकलती है, और एकलव्य वालों की बहुत अच्छी अच्छी। भोपाल वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यूजियम है, भोपाल वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा पत्रिकाएँ निकलती हैं, भोपाल वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल पत्रिकाएँ निकलती हैं, और भोपाल वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा अखबार भी निकलते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ आगे जो शख्स हैं वो काफ़ी समय से मौका तलाश रहे हैं, प्लीज पास ऑन द माइक टू हिम। असल में लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम इम्तियाज़ अली है और मैं कचरे पे काम करता हूँ। जी जी। आपसे सवाल है, आपकी तरह पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन जो लिखे पढ़े पत्रकार हैं और वो जो सोशल मीडिया या ई पेपर के माध्यम से परोस रहे हैं, वो जो समाज में पहुँच रहा है, उसका एक बड़ा नकारात्मक समाज में संदेश जाता है, उस पर आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, स्वीकार तो आप कर रहे हैं ना, उसको ना स्वीकार करें। टेलीविजन में जो चीज़ पसंद नहीं आती है, ऑफ कर देते हैं ना उसको। वो देखिए, वैरायटी इतनी ज़्यादा है। ये जो फ़ोन है, फ़ोन में जो कैमरा आ गया है ना, इस कैमरे से क्या हो गया है कि अब इस वक्त इन दिनों माने लाखों पत्रकार हैं, लाखों, हजार और सैकड़ों लोग हैं, हर आदमी पत्रकार है। हर आदमी एक फ़ोटो खींच के अपने आप को क्लिक कर देता है और अपलोड कर देता है। वो अपने आप को अव्यक्त कर दिया, वो अपने आप को पत्रकार समझ लगा, अपने आप को उसने कम्युनिकेट कर दिया। तो बेहतर, तो ये जो कचरा हो गया है, तो इस कचरे में सुई आपको ही ढूंढनी है, कचरे में हीरा आपको ही तलाशना है, और ये आपका ही स्किल है। तो आप तलाशिए उसको, क्योंकि मर्जी है आपकी, क्योंकि दिमाग की मेमोरी है आपके पास बहुत शॉर्ट मेमोरी है। क्यों उसको कचरे से भर रहे हैं? बिल्कुल ब्रजेश, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आप पूरी कर लीजिए। फिर एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर छोटी सी इनकी इजाज़त से एड ऑन करना चाहूँगा कि बाज़ार का बहुत भयानक हमला है, होता ही है, लेकिन उदारीकरण के बाद ये हमारे ऊपर भी है। और इसका सबसे ख़तरनाक बात होती है कि हमारी अभिरुचि को विकृत किया जाता है, मॉर्बिड किया जाता है। और इस विकृति से लड़ने के लिए हमें अच्छी चीज़ें सामने, वही माल्थस का सिद्धांत कि खोटे सिक्के इतने हो जाएं। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ब्रजेश जिसकी बात कर रहे थे, मेरे 22 साल के एक रिलेटिव हैं, वो रामायण के नाम पर भी मोबाइल उठा लाते हैं। व्हाट्सएप में है ना, कुरान की आयत है तो है ना, गुरु ग्रंथ साहब है ना, प्रेमचंद है ना इसमें। यानी उनके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही ज्ञान का सबसे बड़ा तंत्र है। आप मत उलझिएगा जी, तो ये इससे बचें बस। और इस व्हाट्सएप से दूर करने के लिए ऐसे आयोजन होते हैं, और मैं चंदा साहब से कहूँगा ऐसे आयोजन लगातार करें, तभी लोग व्हाट्सएप से दूर होंगे और किताबों के पास आएंगे। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, शरद जी, बहुत ही रोचक बातचीत थी। आई एम श्योर सवाल होंगे पर वक्त की कमी है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं इनवाइट करना चाहूँगा अभिलाष खांडेकर जी को, जो कि फाउंडिंग मेंबर है सोसाइटी फॉर कल्चर एंड आर्ट एंड सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। मैं चाहूँगा वो आगे आएँ और हमारे ऑथर एंड डिस्कसेंट का सम्मान करे। एक मोमेंटो जो एक पेंटिंग के स्वरूप में हमारे सामने मौजूद है, अ पेंटिंग based on tribal art which has been created by Padma Shri Bhuri Bhai ji. जोरदार तालियां होनी चाहिए। A memento as a symbol of love and respect on behalf of the Bhopal Literature and Art Festival. And we have a mug to go along for our discussant Sharad Dwivedi ji, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस डिस्कशन को बांध के रखा, हम सभी को इन्वॉल्व रखा। और आपका भी शुक्रिया यार, आपने बहुत बढ़िया कंपेयरिंग की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस जी हाँ, ऐसे ही लोग हैं जो पावर ऑफ जर्नलिज्म को कायम रखते हैं और हमारे सामने एक बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, let me announce one of the most awaited sessions of the Bhopal Literature and Art Festival. This is going to be the 8th session of this day, and the session is titled as it's an interesting one, India versus UK, the biggest diplomatic win. And for this session, I would request all of you to please be seated. And yes, don't move out without answering the quiz question. एक quiz question आप सभी के लिए है। quiz question को आंसर करिए, उसके बाद ही उठिए। Quick quiz question, 1913 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इस आर्टिस्ट ने जीता था। इस आर्टिस्ट का नाम बताइए। वंडरफुल,
Whoever answers first. सबसे पहले किसने आंसर किया? सबसे पहले जिन्होंने किया, प्लीज आइए। आपका शुभ नाम? जी हाँ, आपका नाम? दीपिका। दीपिका जी के लिए तालियां होनी चाहिए। राइट आंसर, शर्मिला टैगोर जी। चॉकलेट का डब्बा लेके आ जाओ, गेट इट। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी से दरख्वास्त है, कृपया जहां है वहां विराजमान ही रहें, क्योंकि ये जो आने वाला सेशन है, इट्स गोइंग टू बी श्योरली गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट that we are going to witness. As I said, the title of the session is India versus UK, the biggest diplomatic win. And for this incredible session, we have an esteemed personality, Saeed Akbaruddin ji, in conversation with Manjeev Singh Puri ji. मैं चाहूँगा तालियों के साथ हम इन दोनों महान हस्तियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें इस मंच पर. The author, Ambassador Saeed Akbaruddin ji has been for long India's diplomacy's most visible face. Recently, he joined as the Dean of the Kautilya School of Public Policy, following a distinguished diplomatic career spanning more than 3 decades. Entering the Indian Foreign Services in 1985, he retired in April 2020 as the permanent representative of India to the United Nations. I think that calls for an applause, everyone. Ambassador Akbaruddin ji was instrumental in articulating India's foreign policy stance on international issues as the official spokesperson of India's Ministry of External Affairs. He is among the few Indian diplomats who has the distinction of also serving as an international civil servant in a United Nations entity. In his book, Akbaruddin ji presents a behind-the-scenes account of India's coming of age in world affairs through the prism of this momentous election. And as the discussant, we are happy to have Ambassador Manjeev Singh Puri ji. He happens to be a former Indian diplomat who has served as the Ambassador of India to European Union, Belgium, Luxembourg and Nepal. He was also the Ambassador, Deputy Permanent Representative of India to the UN in New York. In addition, he has served in Germany, Cape Town, Muscat, Bangkok and Caracas. He is presently a distinguished fellow at TERI, the Energy and Resource Institute, and I would request the gentleman to please unfold the conversation, and we must give a round of applause. थैंक यू जी. आपने दो चीजें सुनी होंगी. एक तो आपने एक आजकल बहुत प्रचलित मुहावरा है, वोकल फॉर लोकल. वो आपने पिछले सेशन में जरूर अच्छी तरह देखा होगा. लोकल इंटरेस्टेड एवरीवन, एंड देयर वाज नेसेसरीली अ लॉट ऑफ, लेट मी से, वोकल फॉर इट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन भारत जैसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश अगले 5 साल में बनने वाला है, और ये चीज आप नोट करिएगा बच्चों, आपके यहां भी अगर ज्योग्राफी की क्लास होती है तो आपको क्या बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत तो नहीं बोलते, चीन बोलते हैं ना. चीन बोलते हैं ना. नहीं, सबसे बड़ा देश साइज में रूस, अदरवाइज पॉपुलेशन में चाइना बोलते हैं ना. अब ये मानिएगा कि अगले 5 साल के बाद चाइना नहीं, भारत होगा सबसे बड़ा देश. आप सोच सकते हैं कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे देश की मानसिकता के लिए और दुनिया की मानसिकता के बारे में हमारे को समझने के लिए. इसलिए चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट भारत के लिए लोकल हो, और हर एक कंट्री के लिए लोकल इंपॉर्टेंट होता है, भारत जैसे देश के लिए विदेश, इंटरनेशनल, भूगोल और दुनिया वो ही अहमियत रखती है जो छोटे देशों के लिए शायद सिर्फ लोकल रखता है. और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग आप सबके बीच में हैं, और मेरे एक बहुत प्यारे मित्र और भारत के बड़े वरिष्ठ डिप्लोमैट, हमारे एम्बेसडर, और जैसे किसी ने कहा अभी, परहैप्स इंडियन फॉरेन सर्विस के मोस्ट वेल नोन नेम, मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटी. और मैं एक और चीज कहूंगा,
हम इनको अकबर बुलाते हैं। इन्होंने हमारे सर्विस में, हमारे सिस्टम में, और मैं यहां तक कहूंगा कि भारत सरकार में, ये जिस चीज के बारे में ये लोग शायद खंडन कर रहे थे, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, लेकिन इन्होंने उसको वहां प्रचलित किया, और वो खंडन अपनी जगह है, उसकी यूटिलिटी उसको मत अंडर एस्टिमेट करिएगा। और अकबर वैसे इनोवेटिव ब्यूरोक्रेट जिन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को भारत के लोगों तक लाने के लिए, और सिर्फ ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं, नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह, आम चीजों में क्या हो रहा है उसको वहां तक लाने के लिए जो इनकी भूमिका रही है, मैं मानता हूं कि शायद ही हम में से कोई, इनके बिल्कुल कोई पास तो आने वाला नहीं है, कोई और लोग ये भी नहीं है जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया। मैं मानता हूं हम लोग सब बहुत खुशनसीब हैं कि आज हम, इनकी एक किताब है जिसका टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में तो बात करेंगे, बट वी हैव द प्लेजर एंड प्रिविलेज ऑफ वेलकमिंग मोस्ट वंडरफुल इंडिविजुअल who by his own actions has possibly fashioned an understanding of India's foreign policy in today's era, आज के समय में। May I please ask you all to put your hands together for Saeed Akbaruddin. For welcome. अकबर, ये सेशन आपका है, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक सवाल करना चाहता हूं। ये टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, इंडिया वर्सेस द यूके। नीचे लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेटिक विन वगैरह, बट आप लोग सब मानेंगे, थोड़ा हंसेंगे भी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये इंडिया वर्सेस यूके में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। भोपाल, यहां पर भी आप लोगों को मजा आया होगा, यहां पर भी वही शासन रहे हैं जिनकी अंग्रेजी सरकार के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था। हमारे दिल्ली में तो हम लोग हमेशा ये याद करते हैं, यहां लिखा हुआ ना 75 ईयर्स, 75 साल अमृत महोत्सव, और हम लोग क्या याद करते हैं कि एक झंडा उतरा और दूसरा चढ़ा। इसलिए ये अगर डिप्लोमेटिक विन अगर किसी और के साथ होती, शायद ये टाइटल ना होता, और शायद हम लोगों की भी इतनी जबरदस्त रुचि, इंटरेस्ट, और मैं ये मानता हूं कि शायद हमें इतनी ज्यादा खुशी भी ना होती। अकबर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जन्म केरल में हुआ और मैं दक्षिण भारत से हूँ, सो मैं हिंदी कुछ उतनी क्षमता से नहीं बोल पाऊँगा जितनी मंजीव पूरी बोल रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तेलुगु, केरल में मलयालम और कई और भाषाएं होती हैं, तो क्षमा कीजिए अगर मैं हिंदी उस क्षमता से नहीं बोल सकूं जैसे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर बस मैं एक कहानी कहूँगा, जब मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिख रहा था तो मेरी हिंदी इतनी बुरी थी कि मैं रोज़ डरता था कि मैं शायद हिंदी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा, और कोई और करेक्ट भी नहीं करेगा मेरा मेन पेपर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कंपलसरी पेपर था। और मेरी एक छोटी बहन थी जो मेरे से शायद 10 साल यंगर थी, तो वो 10th क्लास में थी और वो रोज़ मुझे डराती थी, तुम्हारी हिंदी फेल। तो बस भगवान की कृपा है कि मैं निकल गया और दुनिया और विदेश मंत्रालय में जा घुसा, जहाँ पर ज़्यादातर लोग बहुत ही क्षमता से हिंदी बोलते हैं। तो क्षमा कीजिए अगर मैं अंग्रेज़ी में ज़्यादातर आप लोगों का जवाब दूं, क्योंकि मेरी सोच ज़्यादातर अंग्रेज़ी में है। Coming back to what you have said, Manjeev, I chose the title because, as you said, if I had said International Court of Justice, nobody would be interested. If I said battle at the United Nations, nobody would be interested. So I thought about it, and as you said rightly, it was the first time that we were involved. Generally, we are not interested in elections in international bodies. We are all interested in elections in state
or within our country. Elections in international bodies are only for diplomats. And many people think diplomacy is mostly about protocol and alcohol. But I'm neither attuned to either of these. So I said, let me try and think what will appeal to an ordinary Indian when we try and bring diplomacy. या तो मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता था, balance of power, territorial integrity, sovereignty, justice, ये सब मैं बोल सकता था. लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये सब बोलूं तो कौन पढ़ेगा ये? पढ़ेंगे वही जो मेरे दोस्त हैं मंजी पुरी जैसे. लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये डिप्लोमेसी के बारे में लोग जो डिप्लोमेट्स नहीं हैं वो पढ़ें और समझें. तो इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो आपको या तो हमारी आज़ादी के बारे में याद दिलाता है, और वहाँ पर मैं ये याद करूँगा कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे श्रीमती सुषमा स्वराज, जिन्होंने मुझे हर दिन याद दिलाया ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, हमें जीतना ही होगा. वो विदिशा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी और वो हमारी विदेश मंत्री थी. तो उन्होंने बार बार मुझे ये याद होता था कि ये उनके लिए एक महत्व अलग था, क्योंकि जिन्होंने देखा था कि आज़ादी में कितनी मुश्किल हुई थी हमें. और दूसरा ये था कि जो क्रिकेट में इंटरेस्ट हैं उन्हें तो क्रिकेट की बैटल्स की याद हैं. आजकल भारत में पॉलिटिक्स और क्रिकेट के अगर आप लिस्ट लगाएं तो टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर क्रिकेट, पॉलिटिक्स, मे बी बॉलीवुड एज अ थर्ड. तो इसलिए मैंने एक नाम चुना जो ऑर्डिनरी लोगों से लिंक हो. मुझे पता है कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं ये क्या लगा रखा है आपने नाम, लेकिन बहुत सारे लोग जो बियॉन्ड विदेश मंत्रालय पढ़े हैं ये कहते हैं हाँ हमें ये समझ में आ रहा है डिप्लोमेसी क्या है. क्योंकि डिप्लोमेसी इज नॉट ओनली अबाउट ये बड़े बड़े शब्द, इट इज ऑल्सो अबाउट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स. इट इज अबाउट पीपल who work behind the scenes and bring about change. And that's why I chose that name, to appeal to ordinary people. Akbar, thank you. I must tell you, it sounded very good. It made us feel good. ये आपने जो टाइटल चूज किया, इस टाइटल ने हम सबका जिसको कहते हैं गर्व बढ़ा. It has made us feel proud for a variety of historical reasons. After all, सब कुछ, everything is rooted in history. But let me ask you a different kind of question. तो आप लोगों को शायद मैं उनसे पहले ये कहता हूं कि बहुत संक्षेप में, बिल्कुल ब्रीफ में, if you will just tell us what is the International Court of Justice, what is this election and how does it take place. ये आप लोगों को जरूर इसलिए पता होना चाहिए कि फिर उसके बाद अगर मैं इनको सवाल करूंगा पावर गेम का तो आप उसको समझ पाएंगे. क्योंकि जब तक आप ये ना समझ पाए कि ये इलेक्शन है क्या और किस लिए इसकी अहमियत है, तो शायद इसको अप्रिशिएट करना कि ये कितनी बड़ी विन थी, नॉट ओनली डिप्लोमेटिक बट विन फॉर इंडिया इन इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल ऑर्डर. सो अकबर, लेट्स हियर अ लिटिल बिट फ्रॉम यू अबाउट द ICJ and the election process itself. So if I can respond, Manjeev, international diplomacy or international relations is not a level playing field. हमें ये सब याद रखना चाहिए कि it never was and it never will be perhaps. हम समझते हैं सबको एक होना चाहिए, सब लोग, जैसे कि आप लोग बच्चे जानते हैं वोटिंग में सबको एक वोट होना चाहिए. ये ऐसी एक इलेक्शन है, ऐसा एक इलेक्शन है जिसमें 5 लोगों को एक से ज़्यादा है और बाकी 187 को एक वोट है और 5 को 2 वोट हैं. आप क्या कहेंगे इसको? ये तो गलत है. लेकिन हम सब मान गए हैं कि यही है उसूल.
अब अगर आपको किसी ने कहा कि आप एक इलेक्शन लड़िए जिसमें किसी आपके प्रतिद्वंदी जो हैं उनको डबल हैं आपसे ज़्यादा वोट, आप क्या कहेंगे? ये तो मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि इनके तो अनफेयर एडवांटेज हैं, और ये अनफेयर एडवांटेज इतना ही स्ट्रांग है कि आपको एक वोट है 190 में, उनको भी है एक वोट 190 में, 15 में उनको एक वोट है और 5 साथ हैं, 5 मिले जुले हैं, उनको 5, वो 5 अपने आप में वोट करते रहते हैं। अगर मेरा दोस्त है तो मैं उसको करूंगा, वो जब मेरा कैंडिडेट है मैं करूंगा, लेकिन आपको वोट ही नहीं है, तो आप कैसे जीत सकते हैं ये कंटेस्ट? ये कंटेस्ट, it was one of the most unequal contests ever. If it was in a national election, Dr. Qureshi is here, he would call it ultra-virus. He would say, this is not fair, I will bring it to an end right now. But that is what was in the UN Charter, that this is an election where you have to win twice. Once in a body of 193 countries, which is called the General Assembly, and simultaneously in a body of 15, which is called the Security Council, where 5 have got together. So out of 15, 5 will vote for your opponent automatically before the voting starts. So you have to get 9 from the rest of the 10. So आप समझ सकते हैं कितनी difficulty है. That's why nobody has won that election against a permanent member, और शायद ही कोई will win in the future. It was luck, hard work, God's grace, fortune, whatever you can say. But it also reflected that the world was changing. आज आप लोग देख रहे हैं यूक्रेन में दुनिया कैसे बदल रही है. 4 साल 5 साल पहले this was one of the first signals that the world was changing. When a country took on one of the established powers and beat them at their own game. It was never happened in the history of the United Nations. Perhaps it will never happen again. Because it is a reflection of India and its standing that time at the world stage, and that the world order was changing. And people were acknowledging that the old system cannot continue. The same change you can see right now in different ways. So that's in a nutshell why this is so important. Thank you, Akbar. Very well said. देखो बच्चों, मैं आपकी तरफ जरा ध्यान करता हूं. यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. वहां पर 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं. अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन. ये इलेक्शन इसलिए बहुत अहमियत वाला है कि जो इलेक्शन में 2 उम्मीदवार थे, एक भारत का था और एक ग्रेट ब्रिटेन का था. ये नहीं कि ब्रिटेन का समर्थक था उसका, लेकिन ब्रिटेन का खुद अपना कैंडिडेट था. और जीतने के लिए इलेक्शन उस बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल में भी आपको जीतना है जहां पर ये 5 बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपनी तरफ अपने लिए वोट करेंगे. अभी एम्बेसडर अकबरुद्दीन ने आप लोगों को समझाया कि ये एक बहुत जबरदस्त पावर प्ले का गेम है. यूनाइटेड नेशंस में सारे ही इलेक्शंस पावर प्ले के होते हैं. आपके पास कितना दम है, चाहे कैंडिडेट हो जस्टिस दलवीर भंडारी, लेकिन वोट तो भारत के लिए हो रहा था. बहुत सब लोग उनका सीवी पढ़ेंगे, सब लोग चीजें देखेंगे, लेकिन असल में कैंडिडेट थे एम्बेसडर अकबरुद्दीन, भारत के प्रतिनिधि. लोग इनकी तरफ देख रहे थे, इनके लिए वोट दे रहे थे. इन्होंने बहुत कहा कि भारत का भाव वहां पर जज हो रहा था. लेकिन ये तो एक साइड है कहानी की. दूसरी साइड जो इन्होंने नहीं कही लेकिन हमें सबको माननी पड़ेगी, जो बुक पढ़ने पे आपको समझ आएगी, वो थे इनके टैक्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस क्या है. आप लोगों को मैं ये कहूं, एंड अकबर, इट बी वेरी नाइस इफ यू विल explain a little bit about the process. क्योंकि असल में हम लोग जब बात करते हैं नेशनल इलेक्शंस की तो सिर्फ ये बात करते हैं कि जाइए कौन सबसे आगे आ गया वो जीत गया, खत्म हुई बात. लेकिन छोटे इलेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोसेस सिर्फ ये नहीं है कि आप दौड़ो, जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा.
उनमें कई और किस्म की वेटेजेस होती हैं, और उसको समझना, उसको परखना और उसके दायरे में काम करना, जबकि इतना भारी प्रतिद्वंद्वी था हमारा. So Akbar, it would be great if you would explain a little bit about the process, how in some senses we reached a point where it looked inevitable that things won't happen, and then the change. And those have been beautifully described by you in the last days of what happened. We can talk about Britain's inability or misjudgment, that's not the point. But frankly, in my opinion, they were forced into the misjudgment, if we use that word. And that's your credit. So let's hear from you. So, usually, most people think government officials and diplomats are not very cerebral. They think that, अरे वो तो जाकर फील्ड में काम करते हैं. इंटेलेक्चुअल्स तो बैठते हैं थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और कहीं और, शायद टीवी स्टूडियोज़ में भी. आजकल तो सब बैठे हुए हैं वहाँ पर. लेकिन बात ये है, इन डिप्लोमेसी it is as important to understand issues and their intellectual basis as to implement. Implementation एक तरफ होता है, आप जो देखते हैं हर बार लोग जाकर कुछ implement करते हैं. जैसे मंजीव ने कहा, बस जाकर जीत जाओ, आपको ज़्यादा वोट मिल जाए, जीत जाओ. लेकिन हमने इसको पढ़ा. जब हमने हिस्ट्री पूरी पढ़ी 70 साल के इलेक्शन में, तो तब हमें पता चला नहीं, ये ऐसी जो पहले जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं एक बार, वो जीतते नहीं हैं. हमने पूरा ऐसा डेटा लगाया कि चलिए चार्ट बनाकर देखेंगे कौन कैसा जीतता है. तब हमें पता चला कि जो बड़े बॉडी में जो 190 में जो जीतते हैं, वो हर बार 15 में भी जीत जाते हैं एंड में. पहले तो ऐसा लगता है कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर बार बार इलेक्शन हो तो, क्योंकि 190 में इलेक्शन बहुत ही बदलता नजर आता है, क्योंकि जब लोग देखते हैं अरे एक जीत रहा है, उसके पीछे सब लोग जाते हैं. 15 में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 7, 8, 9, 6, तो 15 में फर्क नहीं लगता है. लेकिन लोगों इसमें एक हमने ये पता किया था कि जब आप ब्रिटेन जैसे कंटेस्टेंट से कंटेस्ट करते हैं तो उनके टूल्स यूज कीजिए. और उनके टूल्स क्या है? रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फेयरनेस, एंड majority should prevail. We are all democracies. So we looked at all this and we understood we must use the same tools against them. So when we started the election with the UK, we were winning in the General Assembly and they were winning in the Security Council, as understandable. And they used every tool at their hand because they are in the Security Council. So they told everybody who has a case in the Security Council, India is not going to help you here. We are here. We will help you. Why are you wasting your time on India? And one ambassador told me, she was sitting and going to make her speech. The British diplomat came and said, don't forget, I know that you are voting for India. Change it now. You may think that this is, again, if Dr. Qureshi was there, he would have disbarred him. But in international relations, everything is fair. You can do all these things and get away with it. Unfortunately, there are no central election commissioners in international relations. I'm not saying that we should go down that path, but all I meant was it is strength. And in that instance, we displayed greater strength. Manjeev was saying that I was responsible. No. I am only what you can say a mukhota. I used to be the face there. I am like a trench warrior fighting in the trenches. It was India's general image. It was the belief that India was a power on the rise and the UK was a power on the decline. That showed it, and that's why the flags, if you see carefully, one flag is going up, one flag is coming down. And that was actually the story of this election, that we not only outfought the British, we outthought them.
And perhaps that is responsible for our victory. Akbar, very well said. And how very opportune. आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, कौन सा झंडा नीचे उतरा, कौन सा ऊपर गया. Very well said. I want to ask you about one specific thing which is mentioned in your book. पिछले बहुत सालों से अब भारत का झुकाव, या इन सम सेंसेस हम लोग बहुत प्राउड होते थे कि हम एक किस्म का न्यूट्रल कंट्री है, नॉन अलाइंड हम अपने आप को कहते थे. लेकिन आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हमने अपनी नीति में थोड़ा सा झुकाव समझिएगा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने अपने रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया किए. और यहां तक कि अभी आपने क्वाड का नाम सुना, और बहुत सारी चीजों में प्रधानमंत्री के, उनके प्रेसिडेंट के साथ बहुत करीबी रिश्ते बने. लेकिन समझिएगा ये, and Akbar, I will ask you to speak on this particular thing which you have mentioned in your book too. जबकि ये इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन यूनाइटेड नेशंस में भारत के लिए हुआ, तो सुनिएगा दृष्टिकोण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. और साथ में ये मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि उसको न्यूट्रलाइज करने में आपने क्या पेचीदियां, क्या टैक्टिक्स और क्या इन्फ्लुएंसेस यूज किए, क्योंकि उसको टू सम एक्सटेंट न्यूट्रलाइज करना एक बहुत ही अहम एलिमेंट ऑफ द टैक्टिक्स नेसेसरी टू एम्प्लॉय टू विन इन दिस इलेक्शन वाज देयर. Akbar, let's hear from you, the United States and India. So you all know that our ties with the United States are on the ascendant. It's not a hidden secret. Yet, it's not only the issue of United States, I'll come to that, but we all know how the United States and Russia are on different sides right now. And they were also on different sides for many years. Yet, both of them combined, the ambassadors, when I went and met them, they said, the Russian ambassador said to me, our ties with you are better than our ties with the United Kingdom. We agree. We also agree that your judge will be better for us than the UK's judge. But, be careful, in diplomacy there's always a but. Everybody says something and then he says, but, means something else is coming. So he said, but, Ambassador, this is a long-standing understanding between, I said, is it written? He said, no, it is not written. But we will always vote for them and they will vote for us, despite we don't like him, we don't like United Kingdom, but we will vote for him. So this is one, but. Let's look at the other but. Here, sometimes the but is also helpful. United Kingdom and USA are very good friends. They are more allied than we are. That is true. Although our ties are improving. But there was one lady who was once known as Nimrita Kaur, who later became Nikki Haley. Anybody heard of Nikki Haley? Right. It was our good fortune that Nikki Haley was the ambassador of the US there. So I called her. I don't know very much Punjabi. I had asked one of my other colleagues to tell me some good words in Punjabi that can I speak to Nikki Haley. Because I told you I am from Dakshin Bharat. And if Manji was there, it would have been such a benefit. But I told Nikki, have some understanding. I will not say what choicest Punjabi words I used because it is best left outside this discussion. And I told her, look, we are all friends. You vote for the UK. We have no problem. But don't go and canvass for the UK. Number one. Second, he was a politician, not a diplomat. So I told her, Nikki, if what the UK was telling was, let's postpone this election. So I told, just imagine,
if the voting is ready, ballot boxes are ready, one day before or the morning of the election, if we tell you election is not held, what will you think? She said, of course, I will think that you fix this election, you are stopping me from winning. I said, that's it. Don't stop this election. And I told her, let us vote now. There would be multiple rounds of votes. I just said, chalo 5 rounds aaj. And tomorrow if we don't win, we are gone. You can find somebody. Then I said, you know, I am involved in this election, so maybe I'm not the right person to negotiate. Kal, why don't they negotiate in Delhi, in UK, London? We have my very good friend there, Ambassador Yash Sinha. He is very sophisticated. He can work it out with you. But let us have this election. So basically, in Punjabi and Hindi and English, I cajoled her and said, let this election go on. Knowing fully well, UK will not agree to this election going on because they will keep on losing. More, and it will become, they will have 40 votes in the end. And it is not sustainable for anybody with 40 out of 190 to contest. Of course, Nikki was the nice, truly at heart Indian, said, हाँ, ठीक है. She said, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ. कल तक वक्त है. So, she gave us time and space. She did not change anything very much, but she provided that time and space which helped us to contest, and the UK knew that if they contest, they are gone. So they decided between losing repeatedly and withdrawing, which is better. If you were given a choice, बार बार हारो या यहाँ से भाग निकलो, क्या लेंगे आप? हारेंगे बार बार या कहेंगे चलो एक बार यहाँ से भाग निकलते हैं? UK also said, he who runs away lives to fight another day. They ran away. और हम इलेक्शन जीत गए. Akbar, absolutely fantastic. And then he says that he was not responsible. He's a wonderful diplomat. Incidentally, this book starts with the exact opposite example. In 1947, India was pitted against Ukraine for a seat in the Security Council. And I don't know if Britain took a leaf out of the Indian book, but maybe Akbar, you'd like to tell people that story too. It's topical. So, how history changes with different situations. In 1947, this was India's first election after independence. So we were wanting to win it. Mrs. Vijay Lakshmi Pandit was sent there, there were a huge delegation, etc. We were contesting against Ukraine to be on the Security Council for the first time in 1947. And it went into many rounds like now. Unfortunately, fate was against us. We lost that election. If we had won that election, the issue of Jammu and Kashmir would not have come to the United Nations Security Council. Look how just one election, one loss has made us be on the back foot for 70 years. If we had won that, we would have been in the Security Council. There would not have been that discussion in 1948 January. History would have been very different for generations of Indian diplomats. Alas, we lost that to Ukraine. Today, if we contest against Ukraine, we will win 9 times or 99 times out of 100. But that one time that mattered, we lost. Very well said, Akbar. Very, very well said. Now let me take you to another facet in the book, which is very important for all of you to realize. That even at the United Nations, diplomacy and action is not only about what the ambassador and his embassy are doing. Ambassador Akbaruddin mentioned to you, you can negotiate in Delhi, you can negotiate in London, but do you know how negotiations are actually carried out? They are not carried out in any gentlemanly fashion, sitting across the table. They are invariably about power games by power people. And now I'm going to ask him,
to tell us this wonderful story, which involved a member of parliament from Madhya Pradesh. And why I am telling you for this story, not because the power person in India was less powerful or less willing to exercise the power, but to give you an illustration of how the real world actually functions in the world. So, to put it simply in a different way, forget the fact that people wear ties, suits, and the best branded clothes. Their actions tend to be only power-packed. And I think it's best that this particular thing, which is mentioned in the book and highlighted in a number of articles, is brought to you straight by the one person who would have been directly affected, and which is Ambassador Akbaruddin. Akbar, tell us about the phone calls. Yes. So, as Manjeev said, diplomacy is not only in United Nations, it's all over the world. तो हमारे जितने राजदूत थे वो हर जगह से कोशिश कर रहे थे. So we realized that they are also trying the UK, and they were raising the level. Every level we try, they go the next level. So Boris Johnson, who is the Prime Minister of UK now, he was the Foreign Secretary. So we got to know he wants to talk to Mrs. Sushma Swaraj. And it was about 10:30 in the night or around 11 o'clock. And the Foreign Secretary, who's now the External Affairs Minister, Dr. Jaishankar, called me. He says, this Boris Johnson wants to call Mrs. Sushma Swaraj. And I said, no, he cannot. Don't allow them to talk. He said, why, what's happened? She says, I said, he wants to do a deal. He will say, let us share this. You and India and UK are friends. So half we will share it. I said, we have to stop it. And she cannot say no. If supposing prime ministers or foreign ministers talk to each other and say, we are friends, let us share this cake. This is the same cake. You take half and we take half. You take the first half. How will she say no? Whereas naughty guys like me can say, Arey Baba, tomorrow we'll talk. Let us vote now. So I said, please don't allow her to talk. But I wasn't too certain whether he will listen to me. He will say, Arey, ye ambassador hai, aise bolta hai. I have to look at my relations with UK, with USA. He will not. Maybe he may. I had a doubt. So I called Mrs. Swaraj at 11 o'clock in the night. She said, Akbar, kya baat hai? Kyun phone kar rahe ho? I said, madam, वो फोन करेंगे, आप फोन मत उठाइए. She said, अरे क्या बोल रहे हो तुम, फोन मत उठाइए, वो तो फॉरेन मिनिस्टर है. मैडम, I said, मैडम आप बोल दीजिए, आपके जो उठाने वाले हैं उनको बोल दीजिए, मैडम सो गई हैं, 11 बज गए, क्या बात है? So she laughed and said, मैडम ये बात मेरी सुन लीजिए, please सुन लीजिए. Then she was very fine minister. She said, अकबर मैंने तुम्हारी इतनी सारी बातें सुन ली, चलो ये बात भी सुन लेती हूँ. And Boris Johnson phoned, sorry, madam has gone to sleep. It is 11 o'clock in India. Tomorrow morning. That's what I wanted. Tomorrow morning you talk in India, wherever. We know that tomorrow morning is not going to come for UK. And Mrs. Swaraj said, हाँ phone आया था मेरा, मैंने कह दिया उनको ना. Done. Within 15 minutes of that, the British ambassador phoned me, we are withdrawing. Now, I don't know, maybe he was phoning to say we are withdrawing. I don't know. But knowing the British, 100%, 99%, I think he was going to say, share this. So why should I share when the whole cake is mine? And Madam Sushma Swaraj bought the cake to us. So the moral of the story is that everybody plays a role. Ministers play a role. Prime Minister plays a role. There is one photograph in this book which shows how the Prime Ministers got our first vote before we even announced. All of you, again, Dr. Qureshi will say, ये तो illegal है. ये तो बिना announcement के कैसे कर रहे हो canvassing? But before we even put the formal candidature, we got a letter one day from Uzbekistan. If you put India's top 10 friends, Uzbekistan is not in that. So I said, how did Uzbekistan come? And he came, ambassador came and said, whoever is India's candidate, we want to vote for him.
I said, how did you, where did this come? We didn't even start it. He said, Prime Minister Modi met our president, and you know, when the president told me, go now, go to the Indian embassy, tell them that we are supporting you. So, different people play different roles, right from Prime Minister to Foreign Minister to people like me and many young diplomats. I have to give tribute to many, many young diplomats who played a role. This was like a team effort of the entire ministry. Manjeev is sitting here, he was in Nepal. I used to pester him, why Nepali? He says, don't worry, they are with you. Manjeev, please go back again. Again ask them. Repeatedly, I was pestering all our ambassadors, so everybody played a role. It was like for us. So if you see now, कि Ukraine में, how did India get 22,500 people out? Because the Ministry of External Affairs knows how to work like a team. We are only team players. Manjeev and I are on the same team. We know each other for 30 years, 35 years, so it's easy to wake him up in the night, to worry him and say, now you go and do this. I was doing that because I knew many of my friends all over the world were working. So if this is a victory, it is a victory attributable to India's team. And that is what was more important than individuals. Akbar, thank you. You know, the message here, and I'm so glad you said it so well and eloquently, this is a message that this was taken as a national endeavor. If you heard what Ambassador Akbaruddin said, that different elements of the government, and incidentally, Boris Johnson wanted to call the Nepalese Prime Minister, who for the same reason said that he'd had a drink too many. So, you know, life is like that. Not that that one vote would have mattered. But the point is, when India takes on things as a national endeavor, and that's, you know, there are 3 or 4 points in Ambassador Akbaruddin's book which are very important for all people who are interested in India in the world stage. In my opinion, one is, of course, the changing role of India and the world's perception of India. And the second thing is, when you take things as a national endeavor, how different elements work. What he's understating and underplaying is his role in strumming this beautiful 4-string guitar. But the role of the individual is absolutely critical. You know, I want to quote something to you which he writes towards the end, but which is absolutely seminal and very important for all of us to understand, whose understanding of elections is based on what happens in India. So national elections are often a metaphor for change. In the international arena, this is rarely so. While many reasons account for this, it is primarily because the nature of contestation is fundamentally different. It's fundamentally a power play. And that is why you rarely see in the United Nations and elsewhere the more powerful actually losing. And that's why this book is very important. Its message is perhaps even more important. Its message, and Akbar, congratulations to you, because it was you who led the team. It was you who recorded all this and recorded it for posterity, for all of us, not just our colleagues, but for younger people in India to feel inspired by what you've done. And this is the India that we look forward to in the 75th year of our independence as we move forward. As I said, not only to become the largest country in the world, but possibly the 2nd or the 3rd largest economy in the world. Akbar, the book has documented something for which each and every one of us as individuals, as citizens of the country, must acknowledge your role, your tactics, your understanding, and the way you not only played the international community, but balanced all of us in our fostering. Congratulations to you. You made India proud, and obviously you made all of us, members of the Indian Foreign Service and all those involved with the India Strait, extremely proud. Fantastic, and thank you. Thank you very much, gentlemen.
I would like to now open the floor for the audience to ask questions. Are there any questions from the audience? Please. The first question has to go to that gentleman. Greetings, sir. I'm Meka Singh Alwale. I'm a volunteer with Bhopal Literature Festival. So my question was, with the India being the global consumer market, these ties nowadays, the ties with Soviet Union, for now India is purchasing millions of barrels of oil at a 22% discount. Will this thing affect in our future consumer market with our allies and different countries that India is buying oil from Russia that is not meant to be, whether Russia is facing very financial sanctions and many different sanctions on a next level, where United States is trying to stop the Russian economy and India is purchasing a discounted oil at discounted price. Will this affect India's policy with the Western allies? Thank you, young man, for asking a question which is both logical and also pertinent in today's environment. So we need to understand that, as Manjeev recollected in this book, everybody pursues their interests. We were friends with Russia, yet Russia voted for UK. We did not say, now you are my friend for 50 years, and so you are not voting for me, now I am angry with you. Nations don't do like we do individually. Sometimes maybe your best friend has other better friends. So if somebody is offering me at 22.5% discount, let me ask you, if you get a 22.5% discount on anything, will you take or not? That's it. If young, enterprising people like you know where your interest stands, let us accept that a country like ours also understands its interests. There are no legal restrictions on buying any oil from any country except Iran right now. So, United States decided it does not want to buy from Russia. All the best to it. Maybe 4 other countries don't also decide we will get cheaper and we will take at 30%, 35%. But countries know where their interests are. Also the others know. We did not get upset with Russia or the US or the UK for doing all the other things that they did to us. But that's all right. In this game, each one looks out of their own interests, and it is not against our interest right now. We are not violating any legal requirement, either from the US itself or from the global community. So enjoy it while it lasts. Any other questions? I want to ask Akbar a question. Akbar, do you know how Justice Bhandari voted in the ICJ on the Ukraine-Russian case? So I know that, Manjeev, let us agree that you gave the answer actually. You said that it does not matter who the person is. Everybody votes for India. Nobody voted for Justice Bhandari. Many people told me actually the UK candidate is better. He is more qualified in international law terms. But your candidate doesn't even have international law experience. Okay, he may be a judge in the Indian Supreme Court, but he doesn't have. But, remember the but? But we will vote for you because he represents India. Now, of course, your argument is Mr. Bhandari voted in a certain case on his, sure, he voted, but this is not against India's interests if a judge in the ICJ voted on a specific issue with the overwhelming majority. There was only one other judge which voted. So if you say that Judge Bhandari does not, or judges in the ICJ don't reflect their country's opinion, don't look at Justice Bhandari's vote. Look at the vote of the Russian judge. Look at the vote of the Chinese judge. So they were all pursuing their interests. So all individuals, I was elected in my, into the, one of the
UN's biggest bodies for administrative matters when I was a first secretary. You think they voted for a first secretary? No. They didn't even know who Syed Akbaruddin was that time in 1990s. But I was amongst those 12 or 14 guys who was posted into the administrative committee on budgetary questions. And I knew I was not there because of me. It is supposed to be independent experts. I was neither independent nor an expert. I acknowledge it, but I was India's candidate, so I went through. So let's accept it that the diplomacy is about interstate activity. Individuals, again, are secondary to it. You know, this is a very interesting point which you've just made. In countries in the developing world, including India, where, if you notice, we often speak in terms of UN ne wo kar diya, UN ye kehta hai. We tend to forget that at the core it is an intergovernmental organization. We also therefore very often look at, and I'm making a bit of a controversial point here, we often tend to look at, for positions there, what, if I may say so, is good people. What the countries who actually run the show look for is our people. This is just to take advantage of Akbar's book and presence here, to mention to you the way international power play works in international governance. There was somebody else with a question there. Yes. Please, sir. My name is Kaustubh. I work in IT company as marketing person, and I was in UK for some time. So I learned a beautiful thing from one of the person. I would like to give an example first and then get your views on that. So we lost in one deal with one of the largest British company, and we lost it badly. While our presentation was best and we were best, like we knew we will win, next day we got a letter that you are not there. So then we hired one of the person from Britain himself, and then he taught us how to deal with them. He actually taught us a very excellent way to deal with them, is to go and get it approved before the meeting itself, and then go in the meeting. So then you end your meeting in 5 minutes and you get approval. So is it true in the international politics with UK as well? And can you share any such experiences you had with British as such? So UK thought that they had won the election before they contested it, because it is in the UN Charter that they are permanent members. And therefore, whatever the deal had in 1945 doesn't exist for us today. In 1945 was the situation different. So there will be many such instances. It is true that in diplomacy, the best diplomat works out the deal before he goes into the field. So why do you think the UK withdrew? Because out of milk of kindness? No, because they understood it. They come into the election ring, they will get 40 votes. So that's the way it works. Quietly we do it, we frighten them, we bully them, we do many things, we can't tell you, including Mrs. Sushma Swaraj not talking to their foreign minister. They understood who's the boss there. So therefore they decided better to run away. The very same example. You know, with the duplicitous, you need to be duplicitous. It's all right. I'm Shlok Chandra. My question is this, that, you know, as diplomats, you helped Justice Dalbir Bhandari get appointed to ICJ. Now, when a contentious issue before ICJ comes, do the diplomats have the right or privilege to say, whisper something in his ear? Or as the saying goes, that once he's elected, the ship has sailed? So, the Jadhav case was decided after Bhandari was elected. In fact, my book says he was only elected because of the Jadhav case. Otherwise, we were not wanting to have a candidate also. And what happened? He delivered. You will not call it in publicly, we will not accept it. He is an independent job, the ship has sailed, we are no longer involved in it. It's like the Russians and all, who did they vote for now? Or look at the voting history of any judge. Show me the voting history of a judge of the ICJ who has voted against his country. They're not going to be there. And why does
even the ICJ acknowledges it, because when a country doesn't have a judge, they allow you to appoint a judge for that case. Why? And always those judges vote for the country concerned. So it is an established fact. We don't need to dig into it and reveal it to public. Everybody knows what it is. We started by saying it's not a level playing field. So that's how. And that is why what Akbar writes, that it is an unprecedented diplomatic win, great. It's also a reflection tremendously of where the UK has gone. It's not just that the flag has gone down a few inches, a hell of a lot less more than that, and a reflection of the change in the global power balance. And therefore, what was achieved there is seminally much more than just the win. It's the reflection and something that certainly catches the eye of anyone who is an observer in this particular game. It's a seminal act. Thank you, speakers, for entertaining these questions. Thank you so much for this wonderful session. Now I would like to request Abhilash sir of the Society of Culture. So on behalf of the organizers, our society, may I request all the audience to give a standing ovation to the person who got the Indian victory, Sayyid Akbaruddin. I want to make this session very memorable. And thank you very much, sir, for the Indian victory many few years ago. And hearty congratulations to you. I had the opportunity to travel with Mr. Akbaruddin to Mexico and South Africa many years ago when Prime Minister Manmohan Singh was the Prime Minister. And I also had good relations with Sushma Swaraj, who was living just about half a kilometer from here for many years in Bhopal. So hearty congratulations to you and thank you very much, sir. Over to Raghav Chandra ji. Now I would request Raghav sir, the Director of Society and Culture and Environment, to please come forward and felicitate the author and the discussant with the memento as a symbol of love, respect and gratitude. The painting is the BLF 2022 mascot and it is based on tribal art by Padma Shri Bhuribai ji. Now I'd like to invite Mr. Chandra to please propose the quiz to the audience. No, this is a very easy one and only meant for the audience. Who wrote the book? You know, the Indian Constitution, the preamble begins with "We the people." Seniors, please give the juniors a chance. Who wrote the book "We the People"? Nani Palkiwala, who said that? Aye, you get the prize. Please clap, sir. कितने लोग हैं? जी जी दो ही लोग जी जी दो ही लोग वो speakers are there? Okay. Please settle down, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please settle down. We are about to begin our next session. Alka Pandey and Harshali Singh. तो अभी अनाउंस करूँ या क्या करूँ?
Harshali Singh and Alka Pandey. Alka Pandey first. Okay. Harshali Singh first, and then Alka. Okay. At first, May I have your attention, please? For our next session tonight, titled Adi Shakti to Modern Shakti, I'd like to invite Harshali Singh and Alka Pandey on the dais. It's an honor to have you, ladies. Please be seated. I would request the audience member to please settle down. Alka Pandey did her double MA in History of Arts from Bombay University in 1981 and Punjab University in 1983. In 1996, she was awarded a PhD in Art History from the Punjab University. Her thesis was on the study of Ardhanarishwara in Indian arts with special reference to Indian sculpture. She is currently working as art consultant at Indian Habitat Center, New Delhi. She is also the visiting faculty of DJ Academy of Design, Tamil Nadu. The book in question is devoted to the understanding of omnipresent and all-powerful Shakti and her sacred abodes known as Pithas. The story of Devi Sati and Lord Shiva ended tragically with the death of Sati. As the discussion for this session, we are delighted to have Harshali Singh on the stage. She is a New Delhi-based member judge in District Consumer Dispute Redressal Commission. Dr. Harshali Singh has written in several literary genres, poetry to fiction, columns to essays. She has been conferred with Iconic Author Award in 2022 by Aesthetics International Lifestyle magazine. Over to you, ladies. Please give it a round of applause. Good evening, everybody. It's a wonderful and an honor to be on this stage tonight. And I hope you have been having a great day, because I've been enjoying myself hearing all the varied discussions that have been happening. We've been skipping from one hall to the other, and we've been having a wonderful time since morning. So thank you so much for staying back and being part of this discussion with Alka ji and I. And so today's topic is the Adi Shakti to the modern Shakti. In my understanding, Adi Shakti or Shakti is the life force. It is the divine mother, the divine power, which helps, which nurtures, which provides security and nourishment. It is a womb from which many come out, or many are given life. And so it is not very, what should I say, it is not a very long thought to say that, like in other cultures, our culture would also revere it, make it into a Shakti that is in all of us, the Shakti that you have, Alka ma'am, researched and made it your own. So tell us a little bit about your understanding of the Shakti. Thank you, Harshali, for the laying down the landscape for investigating Shakti. But before that, I want to really thank the Bhopal Literature and Art Society for holding this session, to my friend Raghav Chandra, who's been gracious as always in incorporating an inclusion of women and the eternal goddess. Thank you very much. I'm delighted to be here. I know it's been a long day,
But I'm delighted for those who've stayed back, because I know you've stayed back because you want to, and that's wonderful. I would like to begin with a very basic shlok which I recite every day. Sarvamangal Mangalye Shive Sarvartha Sarthike Sharne Trayambike Gauri Narayane Namostute. So this is salutations to the goddess Narayani, who's here, who's everywhere, and whose graciousness, whose auspiciousness should bless us every single moment of the day. So my book really is about the 51 Shakti Peeths. I'll just hold the book across because the society has done a wonderful cover which I've seen when I came. It's a small book which you can hold in your hand. It's almost like a Bible which is put in every 5-star hotel in your room. And in some ways, this could also be a Bible for all of us who believe in the eternal goddess, who believe in the primordial energy which guides us, which guides our actions, and which is pure consciousness. It's also about the balance between Shiv and Shakti. So would you like to begin by asking any specific question, or should I just... Should we go... we'd like to understand about how you see Shakti. Okay. What is it that you understand from that word? Okay. So for me, I just want to go back to a personal anecdote. I'm actually looking for my glasses. Yeah, I've got them. I'm actually going to go back to a personal anecdote because, you know, I come from a family where my father is a great believer of the goddess. And we have, as I've been growing up every day, I've heard the Chandi part being recited in my house for the Navratris and the worship of the goddess being present. So everything we devote to the goddess. So when my publishers Rupa asked me to do a book on Shakti, I thought that there would be nothing better than doing on the Shakti Peeths. Shakti Peeth's story, as we all know, is the story of when the father of Sati, Daksha Prajapati, did a big yagya, and because he disliked his son-in-law so much, who was not what in his mind what a son-in-law should be, and did not invite him to the yagya, the wife of Shiva, Sati, and daughter of Daksha went there uninvited. And when she went there, she saw what a disgrace her father had done to her husband, that she jumped into the yagya itself. So smitten was Shiva with sorrow that he took the body of his wife and started doing the tanda with the body of his wife on the shoulders. So deep was the tandav that the gods got very, very worried and realized that if he is not going to be stopped, the world is going to come to an end. So they went to God, the great God, one of the triumvirates, Vishnu, and begged him to appease Shiva in some way. So Vishnu did what he thought should be done. He went with his Sudarshan Chakra and cut the body of the Devi into many parts. Now, many people believe that there were 108 parts. Some people believe there were 101. But I stuck to 51 important Peethas. And through those Peethas, different aspects of the Devi, her different body parts, symbolizing different aspects of the Sharira, are seen. And we, in our mythology, particularly Indian mythology, these are stories which are actually done to give certain, how should I say, tellings to people. And as we will go through our conversation, we will see that how each Shakti Peeth is symbolic of some aspect of the Devi. That's wonderful, and I'm looking forward to that. But before we get into that, I'd like to know, what was the impetus that made you research this? What was it? Only the publisher coming to you and saying that, we'd like to do a book? Or was there something deeper? Was there something more impactful that happened wherein you said that, yes, I want to do this?
So I think it was dovetailing beautifully into my own cultural identity, into my personal identity, into the kind of family that I came from. And I think the publisher also asked me so because he knew that I was very much part of that trajectory of an Indic thought. The book which I had done before with them was on the body, the Sharira. So as you will see that in our, particularly in all our Indic mythology, whether it's Buddhism, Jainism, Sikhism, Hinduism, you will see that the body plays a very important role, and the divine is made in the image of man. So after the Body Sutra, in which I had looked at the body, which becomes actually the receptacle or the portion in which divinity lives, because tat tvam asi, what does it mean? So be it. What does soham mean? All these are thoughts where we talk of the divinity living within ourselves. So from that point of research, the looking into the body parts was becoming very, very, how should I say, as I use the word dovetail, it dovetailed into my own thought process, and therefore my journey of the Shaktipeeth started. And I had also traveled to many of them even before I was commissioned with the book, because that is very much part of my spiritual journey. How lovely. Another question that ties into the first one is that through the research and the massive scale of research that the book would have included, are there any characteristics that we kind of give to the traditional Shakti, and are they different from what society expects Shakti to be like? Are there any are we talking, so I presume we are talking of how Shakti is shown in iconography. You have Durga astride the tiger, you have the Devi, the part of the Navratris when she comes as Mahish Mardini, where she comes to slay the buffalo demon. The Shakti has her own icons of the tiger, of the Khadgamala, where she's wearing skulls of people around her bare body. So the Devi is shown in a terrifying way, in a nurturing way, in a benign way, in a loving way. She's a Saptamatrikas, where as the 7 goddesses, she is the consort of the 7 gods. And as the boon bestowing Devi, as Lakshmi, she has a different form. So there are numerous forms of the divine mother, the divine goddess, the eternal goddess as she is known. My question was that what we see today, today, yes, the role of women, yes, the traditional role of women as is given in the books or the Vedas or any of the the books that have been written, and now in today's world, are the characteristics different and as you have found in your research? Is there any difference, or is it all what is expected? India is a highly nuanced country, and I think it's a very loaded question. I don't know if I can give a general answer to that, but definitely there is one thing, that in India, a woman is very often worshipped as Devi, but at another level, at a more mundane, at a more material level, at a more immediate level, she's often commodified as well. But I think there are different layers, different cultures, different interpretations. You see that in indigenous societies, we have matriarchal societies. You see that many women are given a prominent place, and in many societies where patriarchy is at its best, I do not want to get into that space because that becomes gender politics, identity politics. But at a cultural level, I will say that a woman is held in very, very high esteem in the Indian context. So has the Adi Shakti now transitioned into the modern Shakti?
I think the modern Indian woman is a very powerful woman. It depends in the ecosystem she's operating. It depends on the support system she has. It depends on her own personal self-esteem. It all depends on her own faith. And you have so many stories of women who have been trailblazers, women who are not even known in the newspapers, but they create revolutions in their own little society. So I think there are many Devis floating around, and maybe they are not celebrated, but they are making a big difference. I see it in many of my people, many of the women I work with, and I always hold them in very high esteem. And as I feel like a Dashabhuja Durga, a woman can definitely multitask far more, with due apologies to all the gorgeous men sitting here who do one thing at a time. They are very focused, they do very well, they are very pragmatic, but they cannot create. They don't have a womb. And it's the woman who has the womb, it's the woman who creates. The men are seed givers. So I think it's very, very clear in that itself that a woman, like her reproductive system, the woman is highly complicated, highly nuanced, very difficult to handle, and can be both terrifying, loving, and benign. I think we all agree, even the men. So has Shakti reached her full potential? Shakti has always been at her full potential. It all depends on the Shakti herself, and I think it is the women, if we talk at a very material level, who have given the power to the men. If you look at the pre-pastoral societies, you have the Amazonian woman who had actually cut her left breast because she was hunting. She was not sitting at the hearth and the fire. But over the years, when society became pastoral, women became more nurturing. Women started taking control over the kitchen. So you see, it's with the kitchen that she was wound around in many ways. I think the judicious way today is to have a very good balance, as it is in our philosophy, as we see in the concept of Ardha Nari Ishvara, where the Lord is half woman. There is a complete complementarity between the Purush and the Prakriti, between the Yin and the Yang, and between the male and the female. Oh, wonderful. That is a very thought-provoking comment that you made at the very end, that balance is eventually what we really require in our society. But what are the critical changes that we need to get this balance, to create it, or to reimagine it, or to impact more people to understand it? What is it? What are the few critical changes that you think, in your view, are necessary for our society to find this balance between the masculine and the feminine? So, again, this is a very, very challenging ecosystem, because it's very easy to say and talk about gender and politics, to talk of women empowerment. We have a woman empowerment ministry, we have women's studies in colleges, but these are all at the theoretical base. When we talk of theory, we talk of Lucy Irigaray, we talk of Judith Butler, we talk of sexual politics. It's fantastic. Lots of great thought is being done, lots of great research has been done. But when we come to the actual way where women are working, it's and leaving their homes to work as little potential Shaktis, there is this new Me Too thing which has come out. Now, when you are asking me what should we think, again I think there has to be balance. When you look at the Me Too, I see a lot of men around me so scared these days, because they say, अगर हम कुछ भी गलत कह दें, तो वो हम गलती से छू भी लें उनको, तो Me Too हो जाएगा. Now, this is something which as a woman I feel very strongly about. I'll definitely support a woman. But what I see is this Me Too has become also a political tool. The women who are using Me Too are using it to some extent to their advantage, and the people who really need to use the Me Too don't have the means, wherewithals, or even the education to do so. Again here, thoughtfulness, sensitivity, compassion is required on both ends.
Here I'm even talking of including the male and being compassionate and thoughtful about the male action. Again here, it is about gender balance and sensitivity. Again, we can learn a lot from our mythology and our Puranic tales and the way the Indian gods and goddesses are shown. Every Indian god has a female consort. And this is one thing here, I'll just deviate a little bit, that we are the only religion in the world which believes in vilas, which believes in pleasure, which believes in the four purusharths of dharma, artha, kama and moksha. And that is where all four are in balance, that the Shakti that you are talking of in the material world today can find a place. Because if you don't take the aspect of karma into dharma and artha in equal balance, you cannot get on to moksha. So when we talk of Shakti, the Shakti is not only the terrifying, it's like Caldwell book who writes a whole book saying, "Oh terrifying mother." You don't have to be terrified of Shakti. Shakti can be quiet, can be soft, can be calm, but very, very forceful, as you would see in the various manifestations of the Devi. When you look at Saraswati, for example, or you look at Varahi, or you look at Indrani, or you look at so many of the various goddesses that you see, the Kuladevatas, the Grama Devis, they're all bodies of Shakti. When you see the paintings which have been done by the indigenous artists, they are all full of Shakti in the atmosphere. When they make the Kalpa Vriksha, which comes out of the Samudra Manthan, Lakshmi comes out of the Samudra Manthan, how do these things kind of play out in our lives? And how do you have a balance with them in the real world? That is when the true Shakti emerges. But before we go any further, I have a small PPT of about maybe 10 minutes, and I want to show you the important peethas which are there north, south, east, west. There's even one in Bangladesh, there is one in Sri Lanka, there is one in Pakistan, just to show you that how the evocation or the manifestations of Shakti are seen in the South Asian subcontinent. They are known by different names, but each Shakti Peeth has a particular style of architecture. The prasad of that Devi Mandir is different. When you go to, say, Kamakya, which is one of the greatest Shakti Peeths, the prasad there is of a bali. And if you see in pre-Vedic times, meat, sweet, and alcohol were the three prasads. There was fasting and feasting before the prasads. So we talk of intermittent fasting today. This was very much part of how people lived in the pre-Vedic times. And then we see that if you go down to South India and you see a Shakti Peeth there, the prasad there becomes different. It changes. There is a different kind of a khichdi which is worshipped and given to the goddess, and no meat is given. So you see, if you look at the Shakti Peeths, you will see each one of them having a different kind of architecture, a different kind of prasad, a different kind of ritual, and this is what is so beautiful about the cultural diversity of the wonder that is India. So let me just show you the Shakti Peeths. This is the, can you, इसके अगला दिखाएंगे? हाँ. Now this is the Brajeshwari temple in Kangra in Himachal Pradesh. What you see here is the local Himachali architecture, and in front you will see a place for the Bali. I've actually been to this temple and I saw many, many years ago, almost 30 years ago, a buffalo demon being taken around, and it was quite horrific for me, because when they cut the head of the buffalo, as they had given the buffalo alcohol,
You know, the body still went on running for a little bit, even though the head was taken off. This is the Chintapurni temple in the Una district of Himachal Pradesh. And you will see here the lavish use of gold. The temple is much smaller, and you see a badka paid around. You will see that many of them, you know, offering the red chunari is a very, very typical ritual in a Devi temple. Next. This is the Gandaki temple in Muktinath in Nepal. And here, if you notice, the architecture of Himachal and this temple, there is some kind of a similarity that you see, a kind of a flattish tiered roof. And here, of course, it's a tiered temple because this is very much from the, a little bit what we call in olden terms, Far East, from China kind of pagoda kind of building of the temple, which is different to the other shikhara of the temples in Himachal. Next, please. This is the temple to which, in fact, our Prime Minister had gone, the Jashori Devi temple in Bangladesh. And if you see here, there is again a double layer, and it is almost like what you call a Mughal style architecture with the arches, except there is a shikhar instead of a gumbad on top. Next. This is the very famous Kamakya Devi temple in Assam. It was built over 3 stages, and it is here that it is said that the yoni of the Devi fell, and it is here that the male priests bow down to what they call it the menstruating liquid, though of course it is not exactly that. It is said that the river turns red for 3 or 4 days because of the coming of iron solution into the river, but they take it symbolically to mean that. But here priests actually bow down and put the menstruating liquid on their foreheads, and you can imagine how patriarchy bows down to the Devi here. Next, please. Yeah. Now, this is the Kanyakumari temple in Tamil Nadu, the Kanyashram rock temple. And this here you see, if you also look at the, I don't have a juxtaposition slide of the shore temple in Tamil Nadu, the architecture is quite similar, and the first rays of the sun look down into the icon of the Devi. Next, please. This is the Hinglaj temple in Pakistan. There is no shrine here, but I want to give you another point that in most of the Devi temples, the Peethas which are, you don't really have a Devi Murti. There are little wedges of mountains which are symbolic of the Devi, and different later, over the years, different images of the Devi are made at that point. But the clefts of mountains and you know, which are symbolic of the body part of the Devi are seen here. Next, please. Yeah. Now, this is the Chamundeshwari temple in Mysuru, which is very, very well known in Karnataka. And here you see the Gopuram, how different it becomes. It is very much symbolic of the Dravid style of architecture, and the image of the Devi is inside. Next, please. This is the Kalighat temple in Kolkata, West Bengal, where it is said that the head of the Devi fell here. And if you see that the architecture of the temple is very, very different to what you have been seeing till now, and not even similar to Kamakya, which is next door. It has its own very regional style of the region. Next, please. This is the Godavariti temple in Rajamundry in Andhra Pradesh. And what you see are massive shivlings actually outside, and the Nandi bull and a huge shivling outside. And then it is Uma Kotilingeshwara Swami temple. The temple of, actually it is of Shiva, but the name of the Devi is done there because one of her body parts fell here. Next, please. This is the Sri Salam Malik Arjun temple in Andhra Pradesh, and you can see the lavish use of gold in the Gopurams, which then leads deep into the cavernous Garbhagriha of the Devi. Next, please. This is the Tarini temple in Odisha, very much part of the Nagar style of temple. So what I'm trying to show you is that how the Shakti Peeth, though it is the same body, how in India, as you go down the landscape of India, the morphology changes,
the shapes change, the architecture changes, and even the rituals change. So this is a very, very beautiful, okay. Now this is the Sharada Devi temple in Maihar in Madhya Pradesh. Now this is very, very modern. The back side of the temple is the more older style. This is where they say Maihar, maa ka har gira tha yahan is temple mein. And this is also the temple of Baba Alauddin Khan. He used to walk down here, the guru of Ravi Shankar, and come and pray at the feet of the goddess. He was a great devotee of the goddess. And here you see there is a murti made in a black granite, but at the back there is, I have forgotten to mention that in every Shakti Peeth there is a Bhairav temple. And Bhairav is the wandering Shiva who is wandering around the Shakti. Next, please. This is the East Midnapore, West Bengal temple, and here you see two parts of an architecture, the older part at the back and a newer courtyard for people to sit. You can make out from the materials used in architecture. Next, please. This is the Tripura Sundari temple in Tripura, the Udaipur of Tripura, and you see at the back the architecture is a bit similar to the Kamakya temple that you saw, which was more in white, but this is in a more terracotta finish, because the terracotta is much used in eastern part. If you see the temples of Bishnupur, where you have lovely terracottas, which is in West Bengal, and as you keep going down to Bangladesh, they use a lot of terracotta and materials from the earth. Next, please. This is the Kalika temple in Pavagar in Gujarat, which is on top of a mountain. And you will see that in the very Hindu way of temple building, they are either on top of mountains or near the sea or a lake. This is how the temples normally are. Either on top of mountains, like you see this Pavagar, the Maihar temple, which is on top of a mountain. You have to take a cable car now to go up there. Or they are close to the sea, close to the lakes, and this is how you'll see most of the places where the temples are built. In fact, even in Amarkantak and all the places in Madhya Pradesh, you see a lot of them near the ocean. Not here, it's not the ocean, the lakes and rivers here. Next. This is another very beautiful temple of Sri Lanka. Now, do you see the entirely different color, which changes from Tamil Nadu to Sri Lanka? You see a lot of similar kind in the beautiful Madurai temple, but here it becomes almost over-ornamented like the Hoysala art in Karnataka in sculpture. Here the colors become, brighter and super bright colors, very, very different. But this, of course, is the Indrakshi temple in Sri Lanka, where another body part of the Devi fell. Next. I think isn't this the last slide? Yeah. So this was, I just wanted to show you a very quick journey on how the Devi paths have traveled, how the Shakti has traveled from different parts of the sacred geography of the Indian subcontinent. That was an
actually a journey for us as well. I'm sure everybody had a great time. I think, yes, that deserves an applause. But having watched all this and having heard you and your passion for this, the research that you've done, how has this research or learning about the Shakti, finding things out, you said visiting while we were talking earlier, how has this impacted your life and your creative pursuits? You know, maybe it's just that time of my life. Maybe it's also the pandemic, and I'm sure that all of us who are sitting here, Ladies, and we've gone I'm through. sorry. I would like to remind that we time. are, yes, we are Okay, running I'll out make of the time, last. so please. Last. Thank you. So the pandemic has been also very useful for people of my age group. Definitely, I'm very proud to say I'm a senior citizen, and you know, in our tradition, Shashti Purti is a very, very big thing. It is said that when you are 60, all the stars apparently become the same place as they were when you were born. So the pandemic happened when I turned 60, and literally there was an enforced slowing down. The book had been done, and because there was so much time to inhale, to breathe, to think, to reflect, that so much of the book, so much of the research that I had done, I really assimilated it in a different way. I also took the time to do a lot of courses of temple architecture, aesthetics. So these 2.5 years, I've really been living in the world of ideas, in the world of, you know, many times it's a mid-career break, but I would say it's an end-of-life break for me, because in these 2.5 years, the amount of courses, online courses I did with the time that I had had, that it really helped me to just become more devoted and actually understand what bhakti is and truly understand what surrender to a superior power means. So it has been wonderful. Thank you. How lovely. I Thank think you, this ladies. discussion, I'm sorry, I'm going to take another minute. I think this discussion has certainly told us that we need power and grace, and you embody it, ma'am. Any questions? I think everybody is still processing the kind of information we've been able to bring together. So, oh, wonderful. So this is for you, Alka. You've been extremely devoted. You've been extremely devoted in your study of the goddess Durga, and in some ways you embody that in your own, you know, the kind of energy that you bring into whatever you do. I've seen you in art, in writing, but in India we have different manifestations of the same divinity, whereas in most other religions you have more homogeneity in terms of representations. Why do you think we allow? Is that because of local cultures that allow different manifestations, different representations? Somewhere you will have small pindis, like in Vaishno Devi. Somewhere you will have a full murti of a Devi. Somewhere else you will have some other form. What explains different physical or symbolic representations of the divinity in Indian culture? Is that because of localism, or it is part of our thinking that, you know, of the myriad gods and goddesses, and therefore there are different sub-forms of the goddess in each place? Is it just a local representation, or it is our cultural acceptance of different sub-gods and goddesses, the pantheon? You'll have to give me 2 minutes to answer. It's a very loaded question. Thank you for the question, Raghav. The thing is that I'll just begin with some differences between the West and us, and even the Far East. We are a deeply interpretive religion. We don't have a book. When you look at Christianity, it is a book. You go by the book. So whenever you look at their art
It is more about the Madonna, Jesus, and you go by the book. If you look at older civilizations like the Egyptian civilization, the Roman civilization, or the Mayan civilization, they also have a lot of fertility symbols like we have of our goddess. But the thing is that we developed, for many years, we developed in a very, very different, in a very fantastic way, whereas the countries in the West were still fighting. You still had the, you know, the Gauls, and you still had the Crusaders coming. It was a very poor country, you know. The countries of Europe were almost, not civilized. And if you look at till the Tudors, till the Stuarts, you look at the way they lived. Their parliament came out so late, whereas we as a civilization were already so well developed. None of them had the Vedas, none of them had the Arankyas, none of them had the books of knowledge as we did. I'm not talking about looking back at India as a hoary, you know, the wonder that was India. I still believe the wonder that is India. But with us, we have a deeply plural culture, a culturally diverse geography and an ecosystem. And if you look at all our 29 states and I think 11 union territories, each one is a country within itself. I always believe that India is a continent, it's not a country. So if you go to Madhya Pradesh and you see the Kula Devatas and the Grama Devatas in Madhya Pradesh, and you go to Uttaranchal and you look at the Devi worship there, it's completely different. You have lot more ghosts and ghouls and all kinds of things in the mountainous regions, because the culture of the people who live in the mountains is dotted with the stories and the mythos of that region. You look at the indigenous, what we call the tribal societies, they are guided completely by nature. The Maua tree represents everything from medicine to food to alcohol. They get everything from there. So they're Pithoda gods. The Gonds have their own gods. So they worship, and I think every community, every society, so there is a local, there is a national, and there is a global. So in India, we are very, very layered. So if we begin from an indigenous state to a city state to a metropolitan state, it's all very different, and things are changing all the time. I wonder if I could have even answered that question. Very well answered. Now I would like to request Raghav sir, Abhilash sir. Abhilash sir, the founding member of Society for Culture and Environment, to please come forward and felicitate the author and the discussant with a memento as a symbol of love, respect and gratitude. Please give them a round of applause, ladies and gentlemen. It is a painting. This is a painting of BLF mascot. It's based on the tribal art by Padmashri Bhuribai ji. Now I'd request Mr. Raghav Chandra to propose the quiz question to the audience. Over to you, sir. Quick quiz question. That's a tongue twister. Which former BBC correspondent is the author of the book Amritsar, Mrs. Gandhi's Last Battle? That's very easy. That gentleman there. I won't give it to Vikas because Vikas is a publisher and his job is to know about books. Please come. And I'll ask one more quickly because I find that people's interest is there. So while he's coming down, which is the longest novel published in one piece in English by a writer of Indian origin? Which is the longest novel in one piece written by an Indian writer? That's right. He's coming down. Very good. Come, young lady.
नहीं दो चाहिए. Gentlemen, ladies, please be seated. We are about to begin our final session for tonight. For our final session tonight, I'd like to call Nitin Gokula with Brigadier Sanjay Agarwal on the stage to discuss on the very important topic beyond NJ 9842, the Siachen Saga. Please give it a round of applause. Welcome, gentlemen. Please take your seat. Nitin Gokula is a media entrepreneur, one of South Asia's leading strategic affairs analyst and author of all over half a dozen books so far on military history, 11 books on military history, insurgencies and wars. Starting his career in journalism in 1983, a specialist in conflict coverage, Gokula has covered the insurgency in India's northeast, the 1999 Kargil conflict and Sri Lanka's fourth Elam war between 2006 and 2009. Now he travels across the globe to speak at seminars and conferences and lecture at India's premier defense college about the book in question about Operation Meghdut, which was launched by the Indian Army on the barren and icy heights of Siachen Glacier to thwart Pakistan from gaining control of this strategically located glacier. For 3 decades since then, India and Pakistan troops have been locked in an undeclared war on world's highest and coldest battlefield. As the discussant for this session, we are fortunate enough to have Brigadier Sanjay Agarwal ji. He is former security advisor to the Ministry of Home Affairs, Government of India, advisor to the Government of Seychelles, a country in East Africa, advisor to National Highway Authority of India, and the President of Service Selection Board, Ministry of Defense, Government of India. He is a master trainer in soft skills with ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India. He speaks on TV on international geopolitics, security issues, etc. Over to you, gentlemen. Thank you. So finally we have Mr. Nitin Gokula with us. Many of you would have seen him. If you saw him 8 years ago, he was in NDTV. And thereafter, he started off on his own. And I must say that he has created a very valuable and respectable niche for himself with his own YouTube channel. He has authored his books. And this book on Siachen was published in April 2014. You would remember that the story of Siachen started after 1971, when Pakistan was fragmented into two, and then it started a cartographic aggression of sorts, started sending mountaineering expeditions into what was clearly Indian territory. Nobody was there from either side, etc. Operation Meghdut, the official start of the Siachen saga per se, the date officially is 13th April 1984. And I was there at that time. I got my second gallantry award from the President of India for the capture of a Pakistani post there. Thank you, ladies and gentlemen. The point I want to make here, which Nitin will cover
After this, he'll give a detailed opening address. I'll have a few questions and then questions from the audience. So the point I've tried to make here is, April 1984 it started, and the book was published in April 2014, 30 years later. So this is something Nitin will throw light on, and then we will discuss further after his opening remarks. Over to you. Thank you very much. I have a small PowerPoint like the previous author here, and because without that you will not get an idea of what Siachen is all about. No, I'm fine. I'll just do it like this. Okay. Yeah. Go ahead. Next. So this is the cover of the book. Can I have that book? So originally, this book was published like this in hardback with this cover. The back cover you see is a snow pillar on which small helicopters like Cheetah and Chetak land for supplies and for evacuating people from there. Anyway, next please. So why is Siachen important? It's important to know geographically, and therefore this map. If you see this map here, the LOC ends at NJ 9842. And from there, that is NJ 9842, when the agreement was signed in 1949 and then in 1972. But Siachen is beyond this, the Saltoro Ridge, as you can see, Saltoro Kangri. Pakistan occupied Kashmir or Pakistan occupied Jammu and Kashmir is on the west of Saltoro Kangri, and Siachen is on the east of the Saltoro Ridge. So Pakistan started sending expeditions, like he said, from Pakistan occupied Jammu and Kashmir into Siachen, because it also gives access to Karakoram Pass in China. Now, cartographically, classically, when you do maps, the line has to go along the watershed. That means high ridges. But here, one of the pioneers of Siachen operations, Colonel Narendra Bull Kumar, a famous military mountaineer, he did a German expedition in 1979 with the Germans, and he saw these maps, American maps, which showed the line going, the LOC ending at Karakoram Pass. Effectively, it meant that Siachen would have gone into Pakistan occupied Jammu and Kashmir. So when he reported this to Army headquarters and to Northern Command, the then officers there who were part of the Northern Command, leading the Northern Command, they started sending our expeditions to those places, and said that cartographically that red line that you see should be the LOC, which should be ending at Sia Kangri, right up there in the north. It should go, because the language of the agreement between India and Pakistan said thence northwards from NJ 9842. So therefore the book is called Beyond NJ 9842, the Siachen Saga. Anyway, next please. So this is the Siachen Glacier. It's 70-kilometer long, one of the world's longest glaciers at the height of more than 20,000 feet. Sanjay would know because he was deployed there. It's all perpetually snowbound. Next please. Why did I choose to do this? Because I reported on the Kargil war for Outlook magazine, picked up from Northeast, and I was sent to report Kargil. And one of the things that I started understanding in Kargil, I was much younger then, that time I started understanding that Kargil happened because General Pervez Musharraf wanted to take a revenge of Siachen, which he couldn't recapture. As a brigade commander, he wanted to capture Siachen, he couldn't recapture, and he wanted to cut off Siachen from rest of India. So Kargil happened, and therefore Siachen remains an important sort of starting point. I mean, the Kargil war remains an important starting point for me when I first heard it, when I went to Kargil. Next, please. So, 2007 to 2013, when I joined NDTV in 2006, after spending 23 years in the Northeast, I started going to Ladakh more often, to Siachen base camp, to Siachen, to Kumar base, and I started going to Pangangso, which you see now in the news. But I started going, this is a boat, army patrol boat on Pangangso. Next please. This is the Changla Pass in Ladakh, which is also in the news now. And this is where I'm pointing to a Chinese vehicle coming into Pangangso, where you see the finger areas and all that, which has now become very famous. All this is between 2007 and 2013. Then suddenly I got
to know that the operation had begun on 13th April 1984. So I said, you know, this is the 30th anniversary coming up. So in September 2013, I decided to write this book. And in 6 months, start to finish, research, travel to the ground, and then writing the book, it exactly took me 5.5 months, and we published it and launched it on 13th April 1984, which is the 30th anniversary of the Operation Meghdut. This is in the base camp where the soldiers are being trained. Go ahead. So I started reviving. Now this is, the base camp is from Leh, it is about 7 hours journey, the Siachen base camp. Go ahead, please. I'm just showing you photographs, nothing else. Please go ahead, next. So this is the Siachen battleground where training is done of the soldiers who go up and deploy at the heights of 22,000 feet and beyond, and sometimes around that much. Next, please. Next. So I started traveling to Ladakh. This is my wife, my perpetual companion for last 34 years. So we were in Ladakh and in the Kargil area and then Siachen. Next, please. This is the Thois base from where troops are taken from Delhi on chartered flights. Jet Airways no longer exists, but that is a Jet Airways flight at Thois Air Base, where they directly fly to Thois, which is close to the Siachen base camp, and from there they start climbing after acclimatizing themselves. Next, please. So why did it happen? I had no plans, but I met somebody who had started the operation on 13th April 1984. Then Major General Sanjay Kulkarni, who was the first Indian officer leading a platoon of 30 people, being airdropped on one of the passes on the Saltoro Kangri. And he mentioned that, we started, and it was a very secretive operation. It's still an ongoing operation, by the way. Operation Meghdut is still an ongoing operation. It hasn't ended. It is Indian Army's longest running operation in that sense. So how they went, he started telling me the story. I said, okay, now I must write this story. So that's how it began. And this is Leh. Next, please. Just go, quickly keep going. So that is where we went to the base camp, talked to the people, and started gathering information of how is it to be deployed there. Is it physically challenging? Is it mentally exhausting? All that started happening. And this is the war memorial in Siachen base camp. Next, please. I think the final thing. So I got down to business in writing, started meeting people. So here I am meeting a soldier who has just come down from being deployed at the height of 24,000 feet. He's come down. So one of the anecdotes I just want to tell you, and very quickly, I asked him, वहाँ क्या दिक्कतें होती हैं? He is from a 2 Bihar regiment. तो उसने कहा, सर कुछ नहीं, वहाँ पे तो heated tents हैं, अभी तो बहुत अच्छा है. This is 2013, nearly 30 years after the operation was launched. Much has changed, much comfortable. But एक दिक्कत है, वहाँ पे चावल पकाने के लिए 13 सीटियाँ लगानी पड़ती है. So his basic thing was that he was not getting the chawal to eat. So that's what he said. Then these are the pilots, one of the bravest people you will get in this world, in the military, who operate beyond the flight envelope of the helicopters, which are meant to go at about 20,000 feet, but they go up to 22, 23, 24,000 feet at that blizzard that happens in the snowbound. And that's the kits that these people carry. Next, please. And I think one of the last few things that are there. So I started meeting the people who were responsible in the beginning to launch Operation Meghdut. In the gentleman in the grey is Lieutenant General M.L. Chibber, who is the man with the cap here after 30 years. He retired in 1984 after doing this operation, and then I met him in 2013 with Brigadier Channa on the right. Who's there in the picture is the man with the specs. In the middle picture, if you can see, left of the general. So I got them together, thanks to Brigadier Channa, and then they started recounting the story. Next, please. So it started, the pace started gathering. This is Sanjay Kulkarni, then Captain Sanjay Kulkarni, retired as Lieutenant General. Next, please. Retired as Lieutenant General Sanjay Kulkarni. You can see the same tilt of the head. And this is the Colonel Bull Kumar on the left, then Army Chief in 1981-82, General T.N. Raina. This is Bull Kumar, a famous mountaineer who just passed away last year. And he was like this. I sat with him in Somvihar in Delhi to get all the details from him of how it started off. And then next.
So quickly, as I announced the project, people started coming up with their memories, their photographs. Quick, just keep going. Some of these old photographs, which are actually from personal collection of my friends in the army, in the military, in the Air Force, in the army, they started sharing their photographs, their stories. Just quickly go. The hard part was to get, the details of the operations. And like Sanjay will tell you, it is a secret operation. You're not supposed to tell everything. But I couldn't get everything. So whatever I got, I put it in the book. So many people have complained to me later that this is not a complete book. And including me, which I will cover. So my point is, it's not an official history. It's just a storytelling. Next, please. Next. So we just kept sifting through what happened. So this is the difficulty. Look at the small toy-like helicopter at 23,000 feet. That's a snow scooter which came much later. Next, please. So there are medical problems. This gentleman, he's a porter. He lost 3 limbs because he went into the crevasse there. But the army restored his limbs, and today he runs a PCO in Ladakh, in Leh. That's how the army takes care of even the people who are not part of the army officially. Next, please. So there are medical saviors who actually are like one person said to me, he's no longer alive, died very young, CEO of that 2 Bihar regiment. He said, sir, यहाँ पे Hector, doctor and porter are our gods. Hector is the helicopter, porter is the porter that I showed you with 3 legs, 3 limbs having been lost, and the doctor. Without them, they cannot survive in Siachen. Next, please. So, one more thing that keeps them going is OP Baba. Om Prakash, one soldier who died one day, now comes into everybody's dreams apparently. And unless you pray to him before you go up and you pray to him after you come back, your tenure is not complete. It's not considered successful. So it's OP Baba. He's called OP Baba, and the faith is absolutely unshakable there. Next, please. So anyway, this I've told you already what is the geopolitical compulsion. Go ahead. It's no longer a bilateral issue, it's China. Just go ahead, just go to the next one because Sanjay has many other things to talk about. So veterans, these are the people who helped me put the stories together. There are people from Air Force, there are people from Army, there are people from the Medical Corps of the Army. Next, please. They're very, very generous veterans. And these are the people. General Malik wrote the foreword to the book. And then Captain Bana Singh, Honorary Captain Bana Singh, one of the 3 living Paramveer Chakra winners. And then, of course, all the others. So I just want to end with what I think about the Indian soldier. And last, final thing will come here. Yeah. You can read it yourself. I think a salute to them is required. A round of applause to the soldiers. And not to me, I'm only an instrument in putting this all together. Thank you very much. This is the end of the PowerPoint presentation. So thank you, Nitin. I think he has made his terms of reference very clear. He has made his time frame crunch and its consequent limitations very clear. And I think as an author, he deserves nothing but praise for this great human interest story that he has told, vibrant, detailed, anecdotal evidences, backed up by photos. The professional crib is that there is only one weak, vague map, but then he has told you that he's doing it as a journalist with only what was made available to him. Also note that when he talks of the people that he has spoken to, and in his book, there is none from my unit 19 Kumaon. Now, I will cover for you not as a criticism of the book, because that he has adequately said and the book is complete. There is certain other aspects that you need to know, because I'm afraid when you see these pictures of men in white, and you see snow scooters, and you see one-man chambers, the impression in the general public of India is that the army is well looked after. It is much better looked after today. It is very good. But in about 30 seconds, I do want to tell you, and I'm not talking of 1962, I'm talking of
from April 1984 till August 1984 when I was there. And I incidentally hold a world record of sorts of staying at above 19,000 feet for 77 days consecutively. Because this is the post I captured and I had to stay there. So it's a world record of sorts because medically it is ill-advised. Nobody does it then or now. Now, the hardships. And here is the role of 19 Kumaon. When we say that there was a battalion which went in, and as he has said, and he's written it in his book, I think it's on page 78, I don't remember. The company was less than a platoon strength. 1 officer, 1 JCO, 27 men. My battalion, 19 Kumaon, went in as a full battalion and established a battalion headquarters at a place which today has become a base camp and a mini township. So when we went there, we had the clothing which you are given in, say, Shillong, or you are given in Leh. And with those areas, the bottoms of our trousers wore off. So what did we do? We never got new trousers. We wore shorts underneath, our PT shorts. And when they started wearing out, we stitched the short onto the trouser. When our shoes started, the soles were wearing, and we were on rock and ice. We put grass, and where did we get grass from? Because some of the packing material had straw. So we tied with wire straw on the sole of the shoe, and you change the plastic frequently, hoping that you don't get chilblain, leading to frostbite, leading to amputation of your toes. So I won't go into the stories of this because I have refused for many channels, only for Netflix when they pursued me for 6 months, because these memories are very painful. And I have refused authorships and co-authorships of the book. It's very painful. Emotionally, to see what, I don't want to remember. I have destroyed all photographs that I had. I am a photographer. I have over 1 lakh photographs, 0 of Siachen. It's so painful. It's so painful. The biggest enemies, and this is common knowledge, number 1, weather. Number 2, your higher headquarters. And the last of the enemy was the Pakis. But the good part was that there was somebody when I said, damn it, I was in the Shikar Club in 1978, you get me a sniper rifle, I'll knock off a few. So somebody got me a sniper rifle. And it filtered down, and in a month I got it. An old 303. And only 50 rounds. So when the first time I had to zero the weapon and all that, I shot a guy. I was so elated. I am not a trained sniper officially, but otherwise I am a sniper. I was elated. And that's where my lack of training came in. Mar diya maine. And my heartbeat went. Another chap stepped down 1 step. Stepping down 1 step at 21,000 feet to get the thing up is a big thing. And the second chap I couldn't kill, I missed him. I hit him, I missed him. So I dutifully reported 2 there is 1 casualty. This was picked up by the radio intelligence, and they said, tell that boy to, I was a boy, tell that boy to convert his MMG into ACAC role, anti-aircraft role. Puma coming to rescue Captain Nabil Khan Asghar force injured. That's when I came to know that this post that I have captured was earlier held by the Pakistani para-commandos. And Captain Nabil Khan has been injured. There is 1 fatal casualty and Nabil Khan is injured and the Puma is coming to rescue Nabil. I had reported 1 casualty. We don't know whether he's died. This is what established the reputation of 19 Kumaon. But leave the 19 Kumaon story aside. Now, he tells me that Brigadier Channa was his neighbor, etc. So the book largely is Channa's narrative. I have read every book published on this. I have chosen not to speak and write. This book is engripping. Having said what I have, this book as a human interest story from the eyes of a journalist, and a special word, he's shown it in his photographs, he has traveled the ground. So he is able to bring out the many small anecdotes. Yes, there are many stories which have been consigned to the dustbins of history. That is unfortunate.
never mind. It doesn't take away from the goodness of the book. Now, Nitin, what would you like to tell our public and our audience who's watching us live about your feelings after you've written this book? Well, I mean, as I said, if I can have that book, and I want to read out one very important passage from here to the audience. When I said this in the introduction, I said this book is not a definitive history of Operation Meghdut, but it is certainly a slice of history seen through the eyes of those who had the opportunity to serve at Siachen. Some of those who had opportunity to serve at Siachen. I have no pretensions of being a military analyst either. I am a journalist who has had the privilege of being trusted by officers and men in the Indian military, a trust I value far more than anything else in my profession. And finally, a 3-decade-long operation like Operation Meghdut will have many untold stories. I have tried to capture as many as possible, but the list can never be complete. That is my failing, but read it for whatever it is worth. I still continue to maintain that it is not a complete story, but it is a story that will interest you because there are human elements in this. There is an experiment done by the medical corps of the Indian Army when one battalion of the Grenadiers was going from Rajasthan to get deployed in Siachen. Rajasthan, you have 50 degrees temperature. In Siachen, it can get to minus 60 degrees. So they said, for whatever their duration of their deployment in Siachen and their journey, we will record their medical changes, physiological and psychological changes that happen in the soldiers. And the soldiers came from different stock, if you may want to call it that. They were Rajputs, Ahirs, Muslims. It was made up of all kinds of religion and region, people from all religions and region. So they studied this Major General Venu Nair that time, Velu Nair. He said that we will do this study. For 2 years they did this. And they came up with the answers for how different bodies react to different situations and the conditions at the highest level. So that is where my satisfaction is, that I could actually bring this to the notice of the people. People have written it before. General V.R. Raghavan, who retired as DGMO, he wrote it from a strategic perspective, from his military perspective. But nobody told the audience how logistics is important. People say, amateurs discuss tactics and strategies. Professionals discuss logistics. How to get the ration there, how to get the food to them, how to get medicines, how to evacuate patients from there. That is what my satisfaction is all about. Absolutely. On this logistics thing, just 1 month ago, there's another gentleman who's writing a book. He's finished it and now it's being converted into a film. So he said, I want your photograph of those times so that a suitable character can be found for the movie. So I sent him photographs of myself a year later, and coincidentally a year earlier when I had gone for the Gorichain expedition, so I'm all bearded. And he said, Siachen, you had beards were allowed in the army. So I had to tell him by first name. I said, friend, we didn't have water to drink because we didn't have fuel to melt the ice. And you're talking of water to shave? And you've written a book on Siachen? I'm sorry. How can you understand that environment? Where I don't have water to drink. I have to suck ice as a popsicle, as a lollipop, to put enough water in. So logistics is the bane, and we are seeing it in Ukraine. Now, I want to ask you another issue. The way things have panned out and the way things are standing today, where do you see the future of the Siachen imbroglio? Well, I think you just heard there was a question to the army chief just 3 months ago whether you would like to demilitarize Siachen. So as a professional soldier, he said, certainly if there are issues we can discuss, but until the AGPL is that Saltoro Ridge, the actual ground position line, unless it is authenticated on the map and accepted by Pakistan, which Pakistan doesn't accept. So by the way, I want to tell this, the interested audience here, Pakistan's deployment is not on Siachen. So when they say we are on Siachen, Siachen is a dispute between India and Pakistan, that's a fallacy. They are west of the Saltoro Ridge, much below. So if this is the ridge, they are down there. They can't even see Siachen. If you look at the map,
they can't see Siachen Glacier. But they have made themselves a party to Siachen. So therefore, to say that we will withdraw and you will withdraw and there will be demilitarization, I think is a fallacy. We should not accept that at all. We should just continue to stay where we are because it's geopolitically extremely important area. So this issue, 2012, 103 Pakistani soldiers were lost in an avalanche. And General Kayani said, we will do something to demilitarize it. And at one point, Mr. Manmohan Singh had said, this should be a mountain for peace. Nothing happened. What he said is right. Pakistan wants us to withdraw and thus create a demilitarized zone. And we have Mr. Syed Akbaruddin here, who is privy to a lot of the international narrative, right, wrong, false, motivated, whatever, on these issues at the UN. He's been having a ringside view and he's influenced narratives there. So those are the issues. But my question to you is, you are saying it will continue like this and be a festering sore. It is not a festering sore anymore in my view. It is. View. There's an economic drain on our country. For a country like India, 3 crores a day is of no drain, I would think. And we should not just think of it in terms of cost. Because there is an additional factor in my view. I'm again not a soldier like you, but at least I get a ringside view of things that are happening. Today, China is also in the equation. And because DBO and the Karakoram highway is to the east of Siachen, we have to take into account that we should not allow the handshake between Pakistan and China to take place above Siachen. And this is the point I wanted. And the Siachen is the wedge between the two. Unless we continue to hold Siachen, they will have a handshake, they will collaborate, they will collude, and they will, in no time, I mean, although it's very difficult in those circumstances or that geography, but you cannot rule out the possibility of them then pressing or squeezing the Indian positions and Indian depth in Ladakh. So therefore, we should never withdraw from Siachen. Now, I would like the audience to ask any kinds of questions. Please identify yourself. Yes, we have one. So my name is Ashish Shakya. I'm a former under officer in NCC Bhopal. Well done. Thank you, sir. Sir, I have one question since I have researched about the Siachen and beyond that. I guess you know about the Belt and Road Initiative between China and Pakistan, right? Also the string of pearls that China is actually offering with different nations so that it can, if any war happens in future with India, so it can conquer us from all the sides, from the mountainous regions also, as well as from the sea regions also. So what do you think India's best decision of not signing the BRI and also collaborating with other countries such as Singapore, Vietnam and Australia for that cross-border relationship and training exercises is the best decision taken by the Indian Army so far to conquering, also to take care of the war in future if any situations like that happens? You answered your own question actually here, because India said BRI is not a transparent scheme or a transparent project. It's not an economic project, remember. It's a political project of China. Therefore, we have not joined it, and it passes through our territory, POJK and Gilgit-Baltistan. So that's one part of it. String of pearls is a much abused, much used term. We can discuss it offline. Don't waste everybody's time here. But the fact is, India is also doing what it needs to do to counter China in Southeast Asia, in Central Asia, and many of these regions where China is also trying to come into South Asia, has come into South Asia. So it's an ongoing game, and it's a decision best taken in national interest. Self-interest, like Mr. Akbaruddin said a little while ago, comes above principles. So I think India has taken those decisions rightly. So, just to add on, since you appear to be well informed, 2017 has been a turning point in Indian projection of its core interests and in its internal reactions to core threats. Dokala. Please don't refer to it as Dokalam. That's a Chinese terminology. Dokala. There were no rhetoric from India, no politician loose statements.
So we took a leaf out of somebody else's book. We were talking softly and trying to carry as big a stick that we could. And China blinked. So that is the turning point, and what is happening today. And today, at the helm of Indian foreign policy, you have a career diplomat. And if you see the equation between a difficult situation for India, between US, India, Russia, India, it's happening wonderfully well. So I would say that we in India can rest assured that the Indian foreign policy and its execution is in safe hands today. Okay? Next question, please. I would also request you to identify who you want it to be answered by. Thank you. Yeah. Yeah. Is there a question? No, I don't think so. All right then. Yeah, there is. Yes, please. This question is for Nitin and for Sanjay. I'm Bharat Vaklu. I'm just curious to understand that you did mention that China and Pakistan are bound to collaborate more in the coming months, coming years. Do you really think that that's something that's going to be sustainable over the long term? Because China is also in a state of flux. So what are your views on this collaboration? Well, I think it is a given that in fact, in my discussions and talks, I call Pakistan China's whatever 37th, 38th province. Colony. Colony, whatever you want to call it. So in that sense, they are deeply embedded. It cannot be decoupled. And they've called it, you know, that famous saying about deeper than the ocean, higher than the mountains, sweeter than honey, and stronger than steel, is what the Chinese said about their friendship with the Pakistanis. So it's not going to decouple so soon. It will, no matter what happens to the Chinese economy or slows down, it doesn't take much for China to give what they're giving it to Pakistanis in terms of military hardware and other help or economic aid that they give to Pakistan. So it's not going to happen in a hurry. That's the bottom line. Do we have any? Okay, so here, China, for the general audience, just like the Pakistan army has a country to look after it, the only political party in China, the CCP, has a country to look after it. It's a big difference which a democracy like India doesn't understand. And therefore, it's a one party, and Xi Jinping has ensconced himself, and there's a litmus test coming up this year. Mr. Akbaruddin is nodding his head in agreement. The way I visualize this, that Pakistan will remain a proxy of China, the sovereignty angle will get diluted, influence of China will reign supreme, that is forgiven. The issue is, how best does India address this? But the Pakistan-China equation will remain close and get closer. Thank you. Do we have any other questions? All right then, we'd move on. I would like to request Raghav Chandra sir, Director of the Society for Culture and Environment, to please come forward and felicitate the authors and the discussant with a memento of symbol of love, respect and gratitude. Okay. Abhilash sir is the founding member of the Society of Culture and Environment. He will be presenting our guests with the memento of honor, love and gratitude. Thank you. Thank you for that wonderful session. So quick question. Bharat Vaklu cannot answer. He is all geared up to answer it. Prem Shankar Shukla can answer if he wants to.
अगर आपको किसी ने कोई किताब दी है जिस पर लेखक का नाम लिखा है धनपत राय श्रीवास्तव, तो वे कौन लेखक हैं और उनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? शुक्ला जी आप बाद में बताइएगा। अगर आपको किसी ने पुस्तक दी है जिस पर लिखा है नाम लेखक का धनपत राय श्रीवास्तव और उसको आपको एक शब्द में कन्वर्ट करना है, किसी प्रसिद्ध लेखक का नाम बोलना है, तो किस लेखक का आप हिंदी लेखक का नाम बोलेंगे? रोली श्रीवास्तव। Please give a round of applause, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please pay attention. There is an announcement. This year, the Bhopal Literature Festival, we present to you the first of its kind live NFT auction at festival in India. We are honored to have Padma Shri Bajju Sham ji and Deepa Sham ji, who will undertake the Herculean task of creating a masterpiece live during the course of the festival. The funds raised from the auction will go towards the upliftment of the art community of Madhya Pradesh. The specialized NFT auction mechanism is created by Web 3.0 startup Metasky, which is backed by Sequoia Capital, Woodstock in joint cooperation with Air Groove, which is a media house specialized in film animation and music. To participate in the auction, scan the QR code placed at the collaborative artwork outside Antarang at the courtyard. The end of this session marks the conclusion of the second day of Bhopal Literature Festival. I would like to thank the audience for joining us and making this session so successful. Please join us tomorrow from 11 a.m. here at Bharat Bhavan for more such exciting and informative session. Thank you and good night.